So let's just start with this. So this is a session for API development. So I will be trying to take most of the things about backends. The prerequisites are JavaScript, जिसके regarding मैंने already एक session लिया. So there's nothing much over there, over here. Let's go to the next slide. Let's see what agenda we have, like what all things we will be like looking at. So some basics of Node.js. तो अगर पिछला सेशन बैठे हो जावास्क्रिप्ट वाला, तो उसमें ऑलरेडी मैंने ना बहुत कुछ ऐसा किया था which we are going to use today too, राइट? तो वैसे बेसिक्स हम लोग थोड़ा सा वापस कवर करेंगे, नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो इसके लिए प्री रिक्विजिट बोल रहा हूँ उसको. हाँ, देन वी विल हैव अ लुक एट क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड इसको ऊपर से समझेंगे. ऑल्सो वी विल ट्राई टू गो इनटू सम डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट की इसको विजुअलाइज करना इजी हो जाए इनसाइड ऑफ अ ब्राउजर. तो विल टेक सम काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन फॉर दिस. उसमें ही हम लोग रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भी देखेंगे कि हाउ these go from one place to another place, right? Then we will learn about npm. ये basically हम use करते हैं to download something, all right, over the internet. यूजुअली कोई पैकेज होगा, लाइब्रेरी होगा. ओके, ये पढ़ रहे होंगे तब मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करूंगा इसके बारे में. लाइक एक्सप्रेस है हमारे पास, इससे हम एपीआई बनाना सीख रहे होंगे. व्यू engines is something that we will use for creating templates like index.html, such kind of templates. Okay. फिर मिडलवेयर समझेंगे कि मिडलवेयर्स व्हाट आर एक्चुअली दीज थिंग्स इन बैकएंड डेवलपमेंट. देन हम डेटाबेस के लिए MongoDB Atlas समझेंगे. दिस इज काइंड ऑफ अ डैशबोर्ड प्लेटफॉर्म वेर यू गो टू एंड क्रिएट योर डेटाबेस, और वहां से आप एक्सेस लेके आप अपने एप्लीकेशन में उसको यूज कर सकते हो, राइट, टू स्टोर योर डेटा. तो इट इज नो एसक्यूएल फॉर्म ऑफ डेटाबेस. इसको भी यूज में लेंगे हम. फिर क्रड ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे कि क्रड ऑपरेशंस क्या होता है. देन एक्सप्रेस राउटर के बारे में समझेंगे. यहाँ तक हमारा बहुत अच्छा खासा प्रोग्रेस हो गया होगा. Then we will move on to MVC approach. All right, and we will try to make this very in a very demonstrative learning form. Right, everything we will try to use some code snippet. अगर कहीं पे like there is some help required, we'll go to ChatGPT for that. We'll try to get some help from AI. Right, so we'll try to keep everything like an example based thing. Okay, तो agenda hopefully सबको clear है. So let's just start with basics now. So introduction to Node.js, right? So Node.js is an open source server-side JavaScript runtime environment. Now, hey, क्या, what does this mean, right? Node.js, Node.js, right? इसको ऐसे भी लिखो या फिर without the dot you can write. It is just fine. People usually go with just Node too. ये kind of understood हो जाता है for the people who know about backend development, right? So it is a open source. मतलब इसका एक community version software है that you can use, okay? Which is free to download and free to use. That is what it is meaning by open source. Server side JavaScript runtime environment. Server side, something which exists on the server machine, right? So JavaScript, matlab some kind of code that is written in JavaScript, right? Runtime environment matlab that gives us a execution environment. मतलब उसके अंदर कुछ processes we can configure and वो उस order में execute होंगे, right? So server side coding is provided by Node.js. Now, why does Node.js provide that? ये बोल रहा है कि जावास्क्रिप्ट का कोड बैकएंड पे रन होगा. सो is JavaScript by itself not like well enough to run on backend? It is not. That is the thing. तो JavaScript क्या होता है ना? It is written in a language that is JavaScript and it is compiled down to machine code. और उसको compile down कौन करता है मालूम है? ब्राउजर्स के अंदर कुछ engines होते हैं. Like Chrome के पास V8 engine है, right? And if I remember right, Firefox के पास Chakra engine है. ऐसे different type of engines they use to compile down JavaScript to a machine code which is actually understood by our browser, right? So that allows us our browser to display things in a right way. Cool. But that engine is not present outside. वो ब्राउजर के अंदर इनबेक्ड है. तो अगर किसी सर्वर पे इसको रन करना है
तो दैट इज नॉट एसेंशियली अ ब्राउजर, राइट? ब्राउजर यूजुअली हमारे क्लाइंट डिवाइसेस पे होता है, लाइक द डिवाइस दैट आई एम यूजिंग। एक सर्वर पे एक एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए रहता है। तो Node.js is something that provides that runtime environment outside of the browser, right? So kind of it is a superset of the JavaScript itself and has additional things that allows it to be executable on a server end, right? Hopefully, थोड़ा बहुत idea लग गया होगा. So let's move on. It allows you to run JavaScript code on server. Basically, मैंने सारा वही अभी explain किया, making it versatile for backend development. So since it is capable now to run JavaScript code, right, on a backend, so why not choose JavaScript itself for the entire development process? Why should we go with Java or maybe any other backend development languages? Okay, we learned about JavaScript for our client development, right? Interactivity add करने के लिए we learned JavaScript, right? Now we want to transition to backend languages. So why should we like put more time into learning a different language like Python or Java? Why not instead just learn Node.js, which is essentially using JavaScript itself, right? That is going to be a easier thing to do. So at that point only it becomes very clear कि पहला choice आपका Node.js होना चाहिए, since you have some knowledge of JavaScript. Although Python based backend systems are also good, right? मैं किसी को shame नहीं कर रहा हूँ, but JavaScript or Node.js becomes an ideal choice if you have some knowledge of JavaScript. Okay? Then let's move down to key features. What are these? Non-blocking and event-driven. So if you have seen my like JavaScript wala like session, right? उसमें मैंने mention किया था कि everything in JavaScript and Node.js are executed on a single thread. Multi-threading का कोई concept नहीं. So usually it is termed as non-blocking single-threaded execution. मतलब नॉन ब्लॉकिंग मतलब कोई भी प्रोसेस आपका ब्लॉक नहीं होगा और वो एक ही सिंगल थ्रेड पे भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंक्रोनस बिहेवियर दैट हैज बीन बिल्ट इनटू जावास्क्रिप्ट एंड नोड.जेएस, राइट? तो मैंने ये ऑलरेडी कवर किया है, इसके अंदर इवेंट लूप्स वगैरह आते हैं। तो फॉर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग पिछला वाला सेशन वुड बी ऑफ सम यूज, ऑलराइट? क्रॉस प्लेटफॉर्म, व्हाट डज दिस मीन? मतलब आप डेवलपमेंट किसी भी सिस्टम में करो, after deployment it is going to be executable by any kind of like OS system. This is what it means by cross platform. All right. Now what does it offer? क्या है मतलब Node.js है, आपने बोल तो दिया कि it is a superset and it has JavaScript for writing code, उसमें और भी features है. So what are these features and how do we use them? So two things that we can like right away think of or मैंने include किया है just to have an understanding of Node.js. Our operating system, because it is a server side language, right? We can play with the operating system, right? We can get some data about operating system. Then file system, right? Matlab, if we want to change something in the file structure, like we want to create something, we want to delete something, we can do that sort of things. So let's take these things into VS Code. Let's see how these actually happen, right? So ये थोड़ा गलत VS Code में आ गया मैं. Let's go to this वाला file and I'll give you some structural. Give me a second. I'll open the terminal. Hopefully it is clearly visible. मैंने zoom in करके रखा है. But yeah. Now this should be even more visible to you guys, right? So index.js is something where we will write our code, okay? And this is the terminal which we will use to execute any type of code that we write inside. Mock is a folder where I have like put together some code for our help. All right. वहां से हम कॉपी करेंगे, हम यहाँ पे लाएंगे. We will understand that code and we will see how it is going to behave. Fine. That is our like motive. Then we have example.txt. तो फाइल सिस्टम से जब हम लोग खेल रहे होंगे ना, तो most of the changes will happen over here. So let's not worry about things and let's start with OS वाला part. ठीक है? So I'll go into this os.js. I'll copy things. I'll come back to index.js, right?
I'll paste it over here. What I'm doing is I'm declaring a constant variable named as OS. Okay. I'm assigning it something. It is not a direct value, but it is a function, require function. Require function is something that allows you to import something else. ठीक है तो I know कि मेरे पास OS जैसा कुछ है, but do I have to copy paste all the lines of code that OS module has first in this file, then only I am able to use it? That is not the case. There is something known as module import and export, right? So there is a module known as OS. Okay. How do we see that in action? यहाँ पे एक link है, ठीक है? And if we click on this, this should take us to Node.js का documentation. All right. What are we studying over here? We are studying OS module that is baked into Node.js. All right. Now these are something which are the methods that are available. Okay. तुम इसको closely understand कर सकते हो. PPT when I will provide you ना. You can see what everything is doing, right? सारा कुछ हमको like meaning नहीं provide करेगा. But there is something in place which is going to give us like an exposure to these many methods that we can use, right? So that is the idea. Let's come back. Full screen पे डालते हैं इसको. Yeah. And let's see what the other statements are. हमने assume कर लिया कि this imports all lines from the module OS. ठीक है? That we just saw inside of the documentation. ठीक है? Now we are trying to console.log. This is a simple statement that puts something outside onto the console. So terminal is a type of console. Okay. Then what we are doing is we have a string and then we have a comma. This is basically work as a बोलेंगे स्पेस बोल सकते हैं राइट कॉमा डाल रहे तो एक स्पेस आएगा और उसके बाद os dot platform. So this method that is going to be there in the documentation that I just showed, right? These are methods that are there in the documentation, and something will happen. It will interact with my OS system, and it will put something into my console. So let's try to do it. क्या होता है behavior, and how do we like actually execute server-side code? So previous tutorial, में, just for demonstration part, I was using something like Node, right? So to use Node, you need to have like Edge. Oh, sorry, Edge folder. Give me a second. Yeah, you need to have Node installation. Yeah, you need to have Node.js in your like system itself, right? So whether you are using Mac OS, Linux, or anything, there has to be a version for your like system, right? So if you are a Windows user, you can come to this website, very first website if you type out Node installation, right? And if you press on this now, this will like download and set up file. And if you execute that one, it will give you access to Node, right, in your system. So the latest version, the latest stable version is 18.18.0. So how do we check it? How do we check it? Let's say मैंने तो install करके रखा है because I am already working with Node, right? How do I check it? I see command prompt में जाके I see a small command which is going to give back the version that I'm working with. So it says I'm working with 18.14.0, right? So it is not a बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं है मैंने बहुत पहले ही मतलब अपडेट करके रखा है तो नो वरीज व्हाट आई कैन डू इज क्लियर दिस एंड एग्जिट आउट ऑफ इट तो दिस इज हाउ यू विल नो कि वेदर नोड इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड और इट इज नॉट फाइन नहीं है तो यू विल हैव टू इंस्टॉल इट only when node is there there is access to this command inside of a terminal right so node index.js why this name because this is present inside of the API directory that I've created, right? That is actually opened up in the VS Code. Good. So enter करते हैं. Now it does something for us, right? It says कि OS platform is Windows 32. Okay, कुछ होगा, right? Free memory is like maybe it is showing कि 6 RAM, 6 GB RAM, right? Total memory is around 16 GB RAM, right? So using this module, using the methods of this module, I've written like
कितना है 5 लाइन ऑफ कोड बट आई एम गेटिंग सम फंक्शनैलिटी आउट ऑफ इट. So using those implemented things to get certain expected output, that is the use of require statements, right? I could have gone to OSCA module, I could have gotten everything from there, and like फिर मैं कर पाता था सी दिस दीज मेनी लाइंस ऑफ कोड राइट. मैं सेम ये सारे कॉपी पेस्ट कर देता उधर ना. तो आई कुड हैव लाइक यूज दीज मेथड्स, बट अ सिंपल रिक्वायर स्टेटमेंट just gives me access to all the methods so that in a cleaner fashion I am able to execute. ठीक है. तो OS का ये काम हो गया राइट. एंड आई ऑलरेडी शोड की डॉक्यूमेंटेशन इज देयर. यू कैन गेट इनटू मोर डिटेल ऑफ डिफरेंट मेथड्स दैट आर प्रेजेंट. तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो बैक टू आवर पीपीटी. ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट फाइल सिस्टम राइट. तो अगर यहाँ पे फाइल सिस्टम लिखा है तो देयर हैज टू बी समथिंग रिलेटेड टू फाइल सिस्टम इन आवर मॉक फोल्डर राइट. तो मॉक फोल्डर में यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है. वी हैव दिस पीस ऑफ कोड, सो विल ब्रिंग इट ओवर हियर. Control A, Control V, nothing fancy. So now we are doing is we are importing a FS module. All right. One thing I'll do here is put this on sleep. Yeah, do not disturb mode. Sorry. ठीक. And I'm importing a FS module that is short for file system. Right. मैं जैसा PPT में लिखा है file system like full form of FS. Then what we are doing is fs.read file. This is the function that is inside of this module, and I am giving it a path. All right. So it is going to look at this directory and look for a file name of example.txt. तो उसको ये वाला फाइल मिलेगा. Then it is taking a content type कि किस content type में इसको write करना है right. Read file करना है. Okay. So I'll have to write something over here. Welcome to this session. थोड़ा लेट बोल रहा हूँ but hopefully that is fine. Then I'm giving it a callback function, and we have understood in detail what a callback function is, right? So this is going to be a synchronous thing. यहाँ पे मैं console log लिखूंगा. So this is going to be logged out first. क्योंकि reading of a file takes some time, like some sort of time, right? कुछ कुछ टाइम तो जाएगा इसको फाइल को ओपन करने में, कंटेंट रीड करने में. देन द डेटा विल बी अवेलेबल फॉर दिस कॉल बैक फंक्शन टू एग्जीक्यूट राइट. सो अगर रीड करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया तो दिस एरर विल बी नल एंड इट विल नॉट शो एन एरर, एंड इट विल जस्ट like console out the contents of the file that I've written inside of the file. All right, so let's see कि expected output आ रहा है कि नहीं आ रहा है. All right, इट शुड से हेलो फर्स्ट बिकॉज सिंक्रोनस वे में जाएगा. पहले यहाँ पे आएगा तो इट विल सी हाँ मेरे को एक फाइल रीड करना है, UTF-8 इनकोडेड है. वो ओपन करेगा, अपना काम करना चालू कर देगा, बट इट विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम. तो आगे भी लाइंस ऑफ कोड हैं राइट. सो आई विल एग्जीक्यूट देम फर्स्ट, एंड वेन एवर these results are ready, I will call back this function. Cool. That is the basic understanding. ठीक है. So hello will be printed out first. That should be the expected behavior. Cool. We get hello first. Then the content of the file is like a read, and it has outputted into the terminal itself. समझ गए? Let's go back to FS now, and now let's write some content inside of the file. Right. And what we are going to do is अभी जो भी content यहाँ पे है ना, it will be overwritten with something else. So we are working with, okay, I need to spell that correctly, node, right? I'll save this thing. What I'm doing is I'm using a different function now inside of the FS module. I'm giving it the path of this example.txt itself. I'm saying take this content that I have given inside of a const variable and try to write it into the file itself. Okay, this is something, a task that I'm assigning. So if I save this thing, it says file was written successfully. मतलब इसको कुछ error नहीं आया. It was a simple task. It did that a simple task. It was able to execute everything, and it successfully returned this console message. Now if we go into the text file, it will see the thing that we have written inside of the const content variable right over here. तो समझ में आया?
these are some modules. I can go inside of this module as well. There is going to be a like a number of lines over here. ये OS module से भी लंबा चौड़ा है, right? So we can go back to our PPT. We can click on this, and this should take us somewhere, right? So this takes us to another documentation by Node.js itself. It sees the module that we are looking at as file system. It has all these things that we can work with, right? So obviously, Sara ko check karna is not an easy task. Plus, I will have to prepare everything for myself, right? So documentation is something that can help you maybe find out the potential of this FS module inside of Node.js. Right? So go to this module through the presentation itself, and you will be able to like find out कि क्या क्या और चीजें हो सकती हैं. So that was a brief understanding of Node.js, right? कि इसको install कैसे करते हैं? You go to your browser, you look for installation, you'll find a file, setup किया, run किया, next किया, and it will pretty much install it perfectly. But do refer to a tutorial if there is some issue. So look for a tutorial that is short in duration and try to copy those kinds of steps to get Node.js installed, right? When that is done, you can play with these kinds of modules. These are not the only modules that are there, right? You can work with other modules. ठीक है. तो अभी के लिए इंट्रोडक्शन के लिए इतना रखते हैं अपन and let's move on. Now we will have a look at client server model, what this actually is, right? इसको भी मतलब बहुत अच्छे वे में हमको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ठीक है. तो क्लाइंट्स आर डिवाइसेस दैट लोकल people use, right? A mobile device, a laptop, a desktop. Then we are basically relying on someone to give us content to watch, follow, or do something with that content, right? And the content is usually provided by something known as a server, right? So if we take an example of Instagram, right? So we as users have our client mobile phone, desktop, whichever thing that we use to interact with our Instagram account. And Instagram as an organization or Meta's child Instagram as an organization has a server setup that is responsible to deliver all kinds of content that we are expecting it to deliver. ठीक है. तो सर्वर वहां पे है, वहां पे उन लोग ने कोड लिख के रखा है. We as a client device only install their like if we are working with Android, we install their APK. If we are working with Apple, we install something that works with iOS, right? And Windows है तो उसका like desktop implementation है, वो install करते हैं हम हमारे device पे. That has all the features like the UI features. But data कहाँ से आएगा? How it is going to show कि this is the list of friends you have, right? How it is going to show कि this is the activity that you have shown in the past week. This kind of data कहाँ पे कहाँ जा रहा है, कहाँ से वापस आ रहा है. This is the responsibility of a server. ठीक है. So server has the responsibility to send back the appropriate data to the client. It has access to databases. Okay, वहां से वो proper data fetch करता है and proper data को bundle करके आपको UI में integrate करके देता है. ठीक है. So this is the client server model. एक overview, not too deep. Now this is a GIF image, right? So it is doing something like there is some translation going on. So we are in like constant कम्युनिकेशन. एक क्लाइंट डिवाइस बहुत रिलाई करता है कि सर्वर कुछ उसको कंटेंट भेजे, ठीक है. तो वी रिक्वेस्ट फॉर दैट कंटेंट and the server as a responsible entity will put together a response and will send back that response to this client, right? Now, if we want to understand this, right, so what we can do is go to our browser and we can go to ChatGPT, okay? And what I'm going to do over here is something fancy, so don't worry about it. I'll enclose this a little. I'll go into the network section, okay? I'll go into the network section. Now, what I'm seeing on this window, right? This part, I'll highlight it for better understanding. इतने पार्ट में जो चीजें दिख रही है ना, दिस इज नोन एज योर फ्रंट एंड, योर यूआई, वट एवर इज गोइंग टू बी शोन इन योर ब्राउजर, राइट. अगर ये यूआई डिजाइन नहीं करते बहुत लाइक लेम दिख रहा होता, राइट. दिस इज सम काइंड ऑफ यूआई, बट देर इज अ लॉट ऑफ डेटा, राइट. एक साइड बार है, वहां पे बहुत सारा डेटा है. सो हाउ एम आई गोइंग टू बी एबल टू एक्सेस दोस थिंग्स? तो अगर मैं इस चीज पे टैप करता हूँ ना,
So just see what is going to happen over here. It should make a request to the server to get the contents of this particular section in ChatGPT, right? So it made a request. Let's enlarge this a little to study it uh, in a better form. मैं थोड़ा सा zoom कर दिया इसको. So what we did is we have headers over here. Request URL. See, we are making a request to this endpoint, okay, and हम इसको कुछ तो send कर रहे हैं जिस हिसाब से ना it is able to configure a response for us and say yes, we found your data that you are looking for, and we are sending those things back to you. So this is the data that I got back, right, for that particular response request, sorry. uh, so if I request for this section ka data, so it will make another request for that and will configure another response for me, and that response will be used inside of my application to render these like history of messages, right? So this is something, this kind of a relationship, right? Which is going on over here, right? I make a request, I get a response. This is actually which is happening due to a proper implementation of front end and back end, right? Front end is where our UI side works, and server is where our processing actually happens for the data. Cool. So hopefully this gives us a better idea कि एक request कब जा रहा है. So whenever I'm clicking, so like this the application that is there that we can interact with, it knows कि अगर मैं इस पे click करता हूँ तो there has to be a request made to the server, then only the data will be available to view, right? तो वो जैसे मैं click कर रहा हूँ, it makes a server request, it gets all the data. As soon as the data reaches the front end, it renders all those things in the manner they want to render, right? That is up to the implementation of the system जो ChatGPT ने बनाया है, right? So request and response समझ लिया अपन ने. Let's go ahead and let's try to look at different things now. अच्छा, यहाँ पे नया चीज क्या आ रहा है? Node package manager आ रहा है. Now what is this? Node package manager क्या है? So Node मतलब जो हमने इंस्टॉल किया, package manager मतलब there are numerous number of packages on the internet, right? People create their code and they post it on the internet in form of packages. They make it as a node package. Now, node package manager gives you access to these numerous packages. Okay. So if you want to work with an existing package that has been created by some good developer, right? So we can use npm to interact with that thing, and we can install that package inside of our code base. So that is the idea behind npm. So it lets you manage different kind of packages inside of your local machine, basically. ठीक है. तो क्या इंट्रोडक्शन देखते हैं. सो इंट्रोडक्शन टू npm फॉर मैनेजिंग Node.js पैकेजेस ऑलरेडी मेंशन. जो भी Node.js के पैकेजेस होते हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए भी रिक्वायर npm. ओके. Then key commands are npm install. So this is one kind of command that we run to install something from the web. All right. npm start is something to like start an execution. All right. Scripts के लिए होता है ये kind of, and etc. There are like numerous number of commands that you can find for this, right? Managing project dependencies. So usually when we work with projects, right, we don't write all the things from scratch. हम लोग है ना सारी चीजें खुद से नहीं कोड करते. We want to rely on some existing system that are in place. Like for client side development, हम React को use करते हैं. So that is a dependency, right? React gives us an already implemented code base. उसके अंदर हम बस वो चीजें प्रोग्राम करते हैं जो हमको शो करना है, हमको दिखाना है, राइट? बाकी सारे चीजें बैकएंड पे अपने आप हो रहा हो. So such kind of project dependencies are managed using npm. So if I want to create a React application, I want to run a command that is npx. Okay, यहाँ पे x क्यों है वो बाद में समझेंगे अपन. npx is something that we use to create a code base. तो React के इंस्टॉलेशन में it is not just like वो इंस्टॉल कर दिया but it does nothing. वो एक्चुअली आपको एक कोड बेस भी जनरेट करके देता है कि go into src directory to write your code. So we will have a look at that later. Okay. Configuration of dependency are stored in package.json. So whatever you install, right, inside of your server side or maybe client side,
it is going to show always show inside of package.js, whatever you are working with. So we'll go into an existing project just to get an idea of things. We'll close everything so that there is no confusion. Do not get overwhelmed by these things. ठीक है? हम ये चीजें भी study करेंगे throughout the tutorial. There is something known as package.json file. इसके अंदर डेव डिपेंडेंसीज आर दीज थिंग्स, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है कि आई एम गोइंग टू यूज दीज एक्सटर्नल पैकेजेस फॉर माय प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। दीज आर द वर्जन्स ऑफ दोज पर्टिकुलर पैकेजेस, जैसे डॉट env है, उसके लिए ये रहेगा वर्जन। ईजेएस यूज करूंगा तो उसका ये वर्जन होगा। तो everything lives inside of this, right? And if I say npm install. So the npm node package manager is first going to go and have a look at this thing, and it is going to see whether these dependencies are installed. ठीक है, क्योंकि इट नोस कि हमारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट होने के लिए इतने सारी चीजें होनी चाहिए। So it will first go and have a look at this. Then it will match the versions. Okay? It will match the versions, and then it will reinstall some things that are not there, right? So for now, it will maybe say, okay, it is installing something. It said कि 13 packages are looking funded. Okay, so कुछ response आया. We do not need to go into the details, but if I do node install, right, and if I remove this folder, node modules, जस्ट जस्ट लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नोड मॉड्यूल नहीं है, ओके। अब मेरे को ये ना एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ मैं ऐप डॉट जेएस। तो ऐप डॉट जेएस इज अ एंट्री पॉइंट। मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो द एग्जीक्यूशन शुड हैपन, बट मैंने सारे डिपेंडेंसीज उड़ा दिए, ओके। मैनुअली अभी आंखों के सामने मैंने उड़ाए हैं, जस्ट टू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आइडियली द सर्वर शुड क्रैश इंस्टेंटली, ठीक है। इंस्टेंट सर्वर क्रैश हो जाता है। इट सीज द मॉड्यूल दैट यू आर यूजिंग इनसाइड ऑफ app.js, JS, sorry, this module that I'm trying to import, right? जैसे FS मॉड्यूल कर रहा था, OS मॉड्यूल कर रहा था, वैसे ही I try to import this, but Node.js के पास सारे मॉड्यूल्स by default नहीं है. You need to manually install them first, right? So it said कि there is an error, भाई, you have not installed this. So what I can do is I can manually do install express EJS, and whatever things that were written inside of .json, package.json. But another thing that I can do is just write install, npm install. This is going to, by default, go and have a look at this, and it is going to make the installation happen. So it will do the installation, and it will create a new node modules file folders for us, right? And this is going to have all the kind of code दैट वी वांट टू यूज, ठीक है। तो डायरेक्टली हम ये इसके अंदर फोल्डर में कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। वी बेसिकली इंपोर्ट दोज थिंग्स एंड वी मेक यूज ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। तो दिस वाज इट। लेट्स कम बैक टू द पीपीटी। ऑलराइट, सो नोड पैकेज मैनेजर देख लिया कि हाउ द इंस्टॉलेशन एक्चुअली हैपेंस एंड क्या बिहेवियर है। सो once you get like in contact with this kind of implementation कि हाँ आपको प्रोजेक्ट सेटअप पहले फर्स्ट करना है, फिर आप कोड लिखना चालू कर रहे हो, तो npm will be a go to, all right. But there are other package managers as well, जैसे yarn है, yarn is yet another resource negotiator में भी, okay. yarn is something that I personally use, वो थोड़ा सा और मतलब ऐसा इंटरैक्टिव लगता है उसको यूज, ठीक है। तो हमने npm देख लिया, देन नाउ वी अंडरस्टूड कि हमको पता है कि हम existing जो packages इंटरनेट पे प्रेजेंट है that we can install and we can make use of those things. So अब API डेवलप करना है तो हम raw like Node.js का कोड भी लिख सकते हैं, otherwise we can rely on some good dependency to allow us to write good code, right? So we are going to make use of Express, which is a standard way to develop RESTful API in Node.js backend. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन है एक्सप्रेस का। इट इज अ Node.js वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो बैकएंड के लिए API डेवलपमेंट के लिए एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, राइट, एक्सप्रेस आपको एक इजी वे देता है टू वर्क विद दोस थिंग्स, ठीक है। डायरेक्टली Node.js के फीचर्स यूज करोगे ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर अ Node.js backend, but express.js like adds a abstraction and makes things easier for us to develop,
राइट, इन अ मोर अंडरस्टैंडेबल वे। तो हम एक्सप्रेस को यूज करेंगे, इंस्टॉलिंग ऑफ एक्सप्रेस। नाउ इट इज सेइंग कि हमको इंस्टॉलेशन देखना है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू npm init। ऑलराइट, नाउ जस्ट सी क्या होता है इससे। इट सीज कि पैकेज का नेम बताओ। ये ना एक पैकेज डॉट जेसन वाला फाइल सेटअप कर रहा है, पैकेज का नेम बताओ। तो आई एम सेइंग एग्जाम्पल, ठीक है। Version is 1.0.0. No description is required. Yes, index.js is the entry point. Test command is nothing. Git repository is nothing. Keywords are nothing. I'll say bam jam 101. License is MIT. Yes, right. When I complete that procedure, right, तो step by step मेरे को prompt करता गया, and I just gave the responses to those prompt। इसने एक package.json फाइल बना दिया, and उसके अंदर ये सारे values बस की वैल्यू पेयर के हिसाब से सेव कर दिया। नेम मेरे से मांगा था, उसमें मैंने एग्जांपल इनपुट दिया था, that got stored। वर्जन लिया उसने, डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ नहीं प्रोवाइड किया तो एम्प्टी स्ट्रिंग है। मीन मतलब the entry point। तो whenever I say node something, right? So it will first go inside of this file to execute something. Then there is a test script. So I can start write a script that is going to be start, and I can say node index.js, right? So what I'm meaning by this, तो मैं अगर npm को बोलूँ npm start, so it is going to go into the JSON file, and it is going to find a script that has a value name as start, and it is going to execute this thing inside of the terminal. So that is what I want, right? So if I run this, nothing will happen because nothing is there। उसने स्टार्ट किया और एंड कर दिया, राइट। सर्वर के अंदर कोई कोड ही नहीं है तो रन क्या करता, राइट। बेसिकली दिस इज द आइडिया ऑफ स्क्रिप्ट्स। So I added a simple script for this। Now what I can do is I can add another script just for convenience। I will say nodemon index.js। All right, we will have a look at nodemon क्या है। author मैंने जो प्रोवाइड किया था, license मैंने जो प्रोवाइड किया था। Now I know to develop a backend system। I want to work with Express, ठीक है। So I will say npm install Express, ठीक है। It will say fine, you want express, I will go and look for that package on the internet, and I will install that inside of your local code base, ठीक है। तो उसने नोड मॉड्यूल्स बनाया, उसने जेसन में एक डिपेंडेंसी करके एक एरे बनाया, एंड वहां पे ये डिपेंडेंसी ऐड कर दिया कि यू आर यूजिंग एक्सप्रेस, दिस इज द वर्जन ऑफ द पैकेज। परफेक्ट, this is what I wanted। So let's go and work with Express first, right? Because we did the installation of Express, we now have like Express available to us in this particular API directory। So I can say Express, I can say require, like I was requiring OS or FS module, I can say Express, right? Now there are a lot of things that I can do with this. So I will just initialize an Express application। So I will say app, and I will say Express, and I will just run this, ठीक है। तो Express gives us a application framework, right? यहाँ पे PPT में it mentions something like that, web application framework। So out of the box आप बस एक फंक्शन रन करोगे ना, तो आपका सारा सेटअप काइंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है, जो सर्वर के लिए रिक्वायर्ड होता है। ऐप इज रेडी। नाउ ऐप के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। इफ यू एक्चुअली वांट टू लिसन फॉर रिक्वेस्ट, because when you put a server side code ना inside of a server infrastructure, तो आप उसको एक कमांड देते हो कि स्टार्ट लिसनिंग फॉर रिक्वेस्ट नाउ। मतलब काइंड ऑफ सीपीयू को ऑन करते हो ना कि कमांड दे रहे हो, नाउ स्टार्ट हो जाओ अभी, राइट। तो ऐसे ही आपके सर्वर को एक कमांड देना है आपको कि स्टार्ट लिसनिंग फॉर रिस्पॉन्सेज ऑन दिस पोर्ट, ठीक है। तो ports are nothing but these are like local host वाले ports रहेंगे। तो सर्वर के भी खुद के लोकल होस्ट रहता है, राइट। तो वो एक पोर्ट लेता है, वी आर वर्किंग विद 3000 पोर्ट फॉर दिस, एंड इट विल स्टार्ट लिसनिंग फॉर द इनकमिंग रिक्वेस्ट, राइट। और फिर वो ट्राई करेगा कि उसके लिए अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बनाए। सो टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स गो इनटू api.js। Maybe that is a little scary। So what we did over here is kind of similar। Now let's come back।
हम वापस से इसको इतना इरेज करके इधर पेस्ट करेंगे. We are importing Express. We are creating an instance of an application by running the Express module. All right. We are specifying a port number. ठीक है, कि इसी पोर्ट पे हमको रन करना है इस एप्लीकेशन को. सो इफ वी गो बैक, बाकी सारा चीजें इग्नोर करते हैं. देर इज अ सिंपल स्टेटमेंट बीनीथ जो हम पेश करेंगे कि app डॉट लिसन टू दिस पोर्ट एंड वेन एवर द कनेक्शन हैपन्स जस्ट एग्जीक्यूट दिस कॉल बैक फंक्शन. राइट. So it is going to say server is listening on port, whichever port we are working with. So this is something known as a template string. Okay, ये backticks है. This is not a single quotation mark. This is backticks. All right. Backticks mark के अंदर there is some way to like use variables inside of it. Right. So I can say यहाँ पे colon mark दे दिया. And now if I say uh, npm start. So what it is going to do is go inside of this package.json. It is going to find this line and it is going to take this command and it is going to replace it and run it for us. And what we are going to get is this thing, this logged to this terminal, right? Now, since it was able to connect to the local host, now it is server is listening on port 3000. So, agar whatever things, whatever processes I describe inside of this file, it is going to be available as a service for people to use, right? वो request करेंगे for the service and you will be able to fulfill that, right? तो हाउ डज दैट हैपन. हमने ये तो देख लिया कि सर्वर सेटअप कैसे करते हैं एंड उसको लिसन कैसे कराते हैं टू अ पर्टिकुलर पोर्ट. राइट. सो नाउ लेट्स एंड दिस थिंग and what we are going to do is let's try to run this. Okay, let's run it again and let's learn about nodemon first. So if I make a change over here, बहुत small change, just that colon mark I have removed. Okay, if I save this file now, nothing will happen. For the changes to take effect, I'll have to completely shut down the execution process and I'll have to rerun it. Now it is going to show the message without the colon symbol, right? So how about we have a package that lets us like make changes and upon saving those changes, the server auto refreshes. All right. So this is something that we want to only do when we are developing the application, right? मैं भी develop कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि बार बार मेरे को यहाँ पे cancel out करके वापस run ना करना पड़े, right? So I'm going to use something known as nodemon. All right. So what I'm going to do is I'm going to add this thing and I'm going to give it a badge that is capital D and I'm going to say nodemon, which is the package name. तो मैं इसको dev dependency के हिसाब से I'm going to install it. ठीक है. So let's see what happens inside of the package.json file. आपके सामने changes आएगा. ठीक है. तो जैसे ही वो हुआ ना, एक dev dependency की list बन गई. ओके. So this is indicating कि आप जब development process में हो तो आप ये यूज कर लो. ठीक है. टू मेक योर कोड. तो मैंने एक कमांड एक स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिख के रखा था, राइट. तो इफ आई कैन डू रिएक्ट सॉरी npm रन dev. ठीक है. ये रन कमांड क्यों यूज करना पड़ा, बिकॉज दिस गिव्स लाइक इंडिकेट्स टू npm कि गो इनटू द स्क्रिप्ट्स. बट बाय डिफॉल्ट npm ऑलरेडी नोज कि अगर स्टार्ट है तो दिस इज बाय डिफॉल्ट अ स्क्रिप्ट ओनली. तो वो बाय डिफॉल्ट जाता है scripts के अंदर to find out the value for start key. But if you are working with something else, so you have to specify run keyword and then you have to the key of that value, right? Now if I see this, right, so it is going to run the application using nodemon, which is kind of a auto refreshing tool for us for when I make changes, right? So if I add a colon, I change the things, it is going to refresh, right? Now it has the colon mark. So that is the use of nodemon. ठीक है. तो हमने देख लिया to add dependencies as well as to add development dependencies, right? Those two things. So hopefully things are understood. What did we look at? We looked at like express कि कैसे हम लोग सर्वर सेटअप कर सकते हैं, उसको लिसन कैसे करा सकते हैं. हमने इंस्टॉलेशन करना भी देख लिया, प्रॉपर लाइक कमांड लाइन से इंस्टॉलेशन किया, राइट. क्रिएटिंग अ बेसिक एक्सप्रेस सर्वर हमने बनाया, राइट. इट इज लिसनिंग ऑन द पोर्ट 3000.
So these steps are done. So we will move on, right? Let's see next up क्या है अपने पास, ठीक है? So now we are going to learn about middleware. Okay. So middlewares are like kind of some are like kind of a standard that you follow. तो एक सर्वर को रन करने के लिए ना एक काइंड ऑफ सेटअप चाहिए रहता है. इट इज नॉट लाइक सिंपली आपने कोड लिखा एंड यू पुट इट टू एग्जीक्यूशन एंड इट इज गोइंग टू रन. नहीं, आपको बहुत चीजें सेटअप करनी पड़ती है एंड मोस्ट ऑफ दैट सेटअप हैज टू बी in form of a middleware. Why? Because all of the setup processes should happen before the execution starts, right? So middleware is something that executes prior to the execution of your server code. Okay? Kind of वही idea होता है. So let's understand the definition and purpose of middleware. ठीक है? तो definition and purpose क्या है? We use middlewares to handle out some kind of configurations. ऐसा समझ लो. So we can use inbuilt middlewares. We can also create custom middlewares. But custom में नहीं जाएंगे, वो थोड़ा सा ज़्यादा और programmatic हो जाता है. ठीक है? So we will just use inbuilt middlewares and we will understand what are the uses. ठीक है? So examples are body parser है, Morgan है. Body parser is something that allows us to work with JSON. ठीक है? JavaScript ऑब्जेक्ट नोटेशन. ठीक है, वो स्टैंडर्ड है फॉर डेटा ट्रांसलेशन, राइट? तो जेसन को समझने के लिए उसको पार्स करने के लिए वी यूज बॉडी पार्स. ठीक है. Then we have Morgan that like works with file system basically. जो file system is kind of difficult to work with, right? तो उसमें एक abstract layer ऐड करता है और भी feasibilities हमको देता है कि file system के साथ और efficiently हम काम कर सकें. ऐसे ही different middleware are there that we can work with. So how do we use middlewares? Let's have a look at that. Let's go back to the code base. Nothing is running. So we will just go into the middleware file that is inside of the mock folder, and we will see what actually do we have here, right? So यहाँ पे कुछ तो लिख के रखा है कि app.use body parser dot json. We are going to just copy this line of code. We are going to bring it over here, and मैं listen करने से पहले I'm going to put it over here. Middle configuration. It is always good idea to like write comments inside of your code so that it is like readable and gives some idea to other developers. ठीक है? Body parser is another dependency over here, but we do not want to work with body parser. We know कि express के अंदर भी ये method तो है, तो we will say express.json. Now what I am doing over here is entire line को देखते हैं. App.use. Okay, so I am saying whatever is provided by this function itself, express.json, use that function for the initial setup of this server instance, right? This is the kind of use for this. So I'm saying do nothing but use all the code that is provided by express.json and do the JSON related configuration for it. ठीक है, उससे ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की इसको ज़रूरत ही नहीं. This is one way to work with middlewares. Now, what we can next have is we can have something like this. Now, this might seem complex at first, but understand करते हैं, right? Point like line by line breakdown करते हैं. So what we are saying is app.post. Okay. तो application is the server instance that we have created. हम बोल रहे हैं कि एक post request आने पे post request. Okay. There are different methods, different type of HTTP requests. तो वो हम कवर करेंगे. तो for now just skip on this. हम बोल रहे हैं कि अगर ये URL पे कोई भी request आता है तो run this callback function. What this function is doing is it is taking the data, मतलब जो भी request के अंदर data हम भेजते हैं वो body में present रहता है. We will see how this works. Postman पे अभी मैं जल्दी से जाता हूँ. I'll just open that up. Meanwhile मैं explain करता रहूँगा. Okay. या तो पोस्टमैन लोड हो रहा है बैकग्राउंड में. लेट्स सी. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेटा ले रहा हूँ फ्रॉम द फ्रंट एंड, मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसके अंदर कुछ डेटा रहेगा. नाउ आई विल सिंपली से console log that data for me. Now the data that is going to be present over here is going to be of JSON format. So if I don't have this line of code, right, so it is not going to be able to log that out and it is going to show an error. So first let's see the error part.
if we are able to like get that error, and we are going to do npm run dev. Now this we know this script basically makes our server available on the port 3000. And if I want to test something out, I can use a tool called as Postman or Insomnia, or there is something else that you can use inside also. That is known as, I think so, Thunder Client, right? You can work with whatever you like. I personally like अपना Postman, all right? Now, inside of this, what I will do is create a request. Okay, and I will say mock because I'm just doing this for understanding purpose. There is something like a drop down. I will select post. Why do I select that? Because यहाँ पे post लिखा था, ठीक है? तो अभी के लिए उतना ही अंडरस्टैंडिंग रखो. हम लोग ये मेथड्स के बारे में और अच्छे से समझेंगे. I will say HTTP localhost 3000 port. Okay, 9000 आ रहा है. 3000 port. And I will say API data. Now, what is this? So, I got that from over here, right? So, I want to make a request to this particular endpoint. Okay. Now, whatever request I make, right, it is going to have some sort of body. And I usually work with JSON. So, I will go to raw, I will select JSON format. All right. And I will just say, okay, I will create a JSON object. I will say first name, Jamil, and last name, right? So I created this JSON object that has one key for first name, and it has my first name, and another key for last name, and it shows my last name, right? So this is the data that I configured to send to this endpoint. You take this data and give me an appropriate response. And what is an appropriate response? I just want to see this thing happen, like get logged over here, console. So this is a response that I want to see, right? So I'll send this thing, and if everything is all right, right, it will send back this response object. Okay, this is a request. रिक्वेस्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं वन ऑफ द दोज थिंग्स आर बॉडी so whatever things I send inside of the body will be accessible inside of this and since I have this commented out वो JSON फॉर्मेट को वो डिबग नहीं कर पाएगा लाइक पार्स नहीं कर पाएगा तो इट शुड शो अस एन एरर एरर देख के पहले साइड कर लेते हैं डेटा रिसीव्ड करके कुछ आया ओके अनडिफाइंड इट्स एरर नहीं आया है लेकिन इट इज सेइंग कि अनडिफाइंड है ब्रो आई एम अनएबल टू रीड दिस थिंग ठीक है so how we are going to be able to read this once we parse all kind of data that is passed to the server, right? जो भी data आएगा front end से, I want that to be passed by express.json first. Then only it will be like readable by our server, right? So if I make that request again, तो it will see this console log ये जैसा हमने response.json मतलब JSON format का response इसको वापस send किया and it has a message that it is showing over here, right? It is showing a JSON object. Inside of that, it has a message and the data received value. Fine. Hopefully that is understood. हमने सेव कर दिया हमने JSON related configuration कर दिया now what we want to see is this object this JSON object should be visible on our console. So if I send this, I got the same thing, and now I am able to access that, right? So this did nothing much, but it made a configuration possible for me in just a single line of code, right? Now I am able to read JSON type of data without having to worry about parsing everything over here. Okay? So this is the use of middleware. Beyond this, we can implement our custom middlewares as well, but that is not in the scope of this session, right? So we will skip on that. Hopefully middleware का essence ही समझ गया होगा. Similarly, ऐसे बहुत सारे अलग middlewares होते हैं. Let's try to work with other middleware also, okay? तो मैं बोलूँगा npm install and I will say .env, okay? So I want to work with .env. That is a package that I want to install. And what I will do is similarly जैसे इसको import किया है वैसे ही I will import .env. .env equals to require and I will say .env. ठीक है? Now what I will do is I will make a configuration for that
.env.config. See, just a single line of code that is going to make my configuration happen. Now, what does this line of code do actually? Does actually, right? So .env is nothing but a .env file, and without this thing, we are not going to be able to access that file. ठीक है? तो इसके अंदर I can declare certain kind of an variable name and separated by a equal to symbol, and I can give a value to it. So this is something fancy. ये अपना MongoDB के साथ जब वर्क करेंगे ना, तो this will come into use, right? So मैं जब middleware cover कर रहा हूँ, तो I want to give you an idea about what this actually is. And don't worry, this is something you don't usually show to other people, but मैं ये cluster को destroy कर दूंगा after this tutorial is done, right? So don't try to use this particular thing. Tutorial में I will explain particularly, and also this cluster is no more there, right? It will be having something like this password. ठीक है? तो I am saying कि .env को configure कर दो. So using this line of code will allow me to console log anything that is present inside of this. How do I access that? If I want to access that, right? I can say console.log process. Process is like an execution process. मतलब एक execution process के बीच में env फाइल को एक्सेस करो and log out the mongo URI value. ठीक है? Mongo URI value is nothing but this value that I have described over here. And if I save this thing, and if I do not put this over here, right? So this is like probably going to give us undefined. All right. तो मेरे को run करने दो इसको. I put it into run, right? Or it is able to access it. Okay, fine. That is not an expected behavior. Maybe I'll have to put it over here. Okay. So maybe if I have it inside of a route, right? So if I make a request for this, let's see. So it says undefined. ठीक है? तो मैं पहले टाइम मिसअप कर दिया. Don't worry about it. So what I'm doing is मैं ट्राई कर रहा हूँ इनसाइड ऑफ अ प्रोसेस. मतलब मेरे को रिक्वेस्ट आया उस प्रोसेस के बीचों बीच प्रोसेस डॉट env को मैं मतलब प्रोसेस को बीचों बीच env फाइल को एक्सेस करो एंड गेट दिस वैल्यू इनसाइड ऑफ दैट env फाइल, राइट? बट हमने जब तक डॉट env कॉन्फ़िगर नहीं किया यूजिंग अ मिडलवेयर, इट इज अनेबल टू रीड दैट. So if I uncomment this part and if I go back to the postman thing, the server is running active. If I make the request again, it will be able to log this like clearly to the console, right? So हमने .env भी देख लिया. We studied two types of middleware, right? So .env will be used for something uh, that you want to store that should be hidden from like other developers, right? I can मैं एक और चीज आपको explain कर देता हूँ, that is git ignore. ठीक है? So whenever we work with git repositories, right? हम नहीं चाहते कि हर चीजें भी git repository पे चले जाएं. तो I am going to say पहली बात node modules तो नहीं जाना चाहिए. Node modules is a very large file. ठीक है? So if I write node modules inside of this file, right? And if I cut this, and if I initialize git inside of this repository or local directory, so it is going to देखो ये सारी चीजों को ग्रीन मार्क कर रहा है, बट ये नोड मॉड्यूल्स को लाइक वो कर दिया, डल कर दिया. मतलब इट सॉ कि डॉट इग्नोर में गिट इग्नोर में लिखा हुआ है, मतलब इसको हमको कभी भी गिट में पुश नहीं करना है. अनदर थिंग दैट वी डू नॉट वांट टू पुश इज डॉट env, क्योंकि इसके अंदर यूजुअली मैं ऐसे डेटा स्टोर करूंगा विच विल बी लाइक क्रेडेंशियल्स लेवल पे सिक्योरिटी एक्सपोज कर देंगे. तो आई डोंट वांट सच काइंड ऑफ डेटा टू बी प्रेजेंट ऑन माय रिपोजिटरी, राइट? तो मैं उसको लोकल डिस्क पे रखूंगा, और जब मैं सर्वर पे एग्जीक्यूट लाइक डिप्लॉय कर रहा हूँ ना, तो वहां पे डॉट env प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन तब करूँ, राइट? ताकि ये एक गिट रिपोजिटरी पे for public view ना present रहे, right? You can come and watch my code, but don't have a look at my like .env values. That is what I mean, right? So जब ये हो गया, तो this is the idea behind git ignore file, okay? तो इसके अंदर आप जो भी नाम स्पेसिफाई करोगे, वो आपका गिट है ना इग्नोर करने लग जाएगा. उसको वो कभी भी ट्रैक नहीं करेगा और कभी भी रिपोजिटरीज पे पुश नहीं करेगा. तो .env is
such kind of a file that you do not want to track. ठीक है, लेट्स कम बैक. हमने मिडलवेयर देख लिए. अब मेथड समझने की जरूरत है क्योंकि हमने एपीआई में कुछ तो यूज किया ऐप डॉट पोस्ट, हमको समझ में नहीं आया, राइट? So let's go back to the code. We'll clear out these number of files just for a better visibility. हम ये भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं. And now I will open up index.js, JS, okay. थोड़ा सा आदत हो गया JSX बोलते बोलते. Now what we see over here is app.post, okay. And I just directly मैंने बोल दिया था कि it is a method. So what does methods actually mean, right? So there are different types of HTTP methods. मतलब HTTP hypertext transfer protocol है जो, right? उसके साथ आपको work करने के लिए different types of method है that can make your life easier, right? So one such kind of method is post that we actually saw, right? So there are HTTP methods that we work with and ये हमको different kind of actions execute करने का वो देता है, providence देता है on the server side. So post is something to create new data. So अगर मैं पोस्ट का ऐसा राउट हैंडलर बना रहा हूँ, राइट, दिस इज समथिंग नोन एज अ राउट हैंडलर, राइट. राउट क्या है यहाँ पे? राउट इज दिस पीस ऑफ थिंग. मतलब इस यूआरएल पे, इस राउट पे अगर कोई रिक्वेस्ट आता है तो उसको हैंडल कैसे करूंगा मैं? उसका प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन पूरा ये डिफाइन करना है. तो आई हैव अ मेथड ओवर हियर कि वो रिक्वेस्ट जो आएगा वो पोस्ट टाइप का होना चाहिए. तो वो देख लेते हैं अपन, इसको रन करते हैं अपन, ठीक है. और मैं ट्राई करता हूँ पोस्टमैन से कोई भलता सा रिक्वेस्ट भेजता हूँ, गेट टाइप का रिक्वेस्ट भेजता हूँ. तो लेट्स सी व्हाट डज इट से. इसने बोला कुछ नहीं मिला, cannot get API data. Why does it not get that? I have that route over here, right? But that route is appended by a method. So this method should also be followed while you are requesting, right? तो अगर post type का method है, मतलब post type का configuration है, तो method should always be post. That is only when it is going to work properly, right? Then only the data will be receiving and this route handler will be successfully executed. Perfect. Coming back to the PPT. Cool. पोस्ट हमने तो देख लिया डेमोन्स्ट्रेशन में, टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ डेटा. तो ट्राई टू विजुअलाइज कि हमारे पास कोई डेटाबेस है, हमको कोई डेटा क्रिएट करना है, तो उसके लिए यूजुअली हमको डेटा सेंड भी करना पड़ेगा, राइट? मेरे को फर्स्ट नेम एंड लास्ट में नेम जैसे मैंने बॉडी में सेंड किया, तो दैट इज काइंड ऑफ अ डेटा दैट आई कुड हैव यूज्ड टू डू मल्टीपल थिंग्स इन द बैकएंड. अभी तो मैंने बस कंसोल लॉक किया, राइट? सो टू क्रिएट न्यू डेटा और टू सेंड डेटा टू द सर्वर, राइट, वी यूज पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट मेथड, ठीक है. And this is ideally used for creation operation, okay. So यहाँ पे order में मैंने किया है CRUD. CRUD operations are something that you learn in backend development, okay. Get is for retrieving data. अगर कुछ hosted data होता, चलो एक route बना देते, okay. app dot get API and response, ठीक है. And I say request and response, and I will say const name general, ठीक है. And I'm just going to say console.json, sorry, response.json, message success, and I'm going to give that data back. So I just want to say, let's say I was expecting the server to give back my name. मेरे पास ऐसा सर्वर है जिसको तुम कभी भी एक रिक्वेस्ट भेजो तो इट कैन रिट्रीव अ काइंड ऑफ डेटा, ठीक है. तो लेट्स मेक अनदर रिक्वेस्ट फॉर दैट, ठीक है. Retrieve, hopefully I'm spelling that right. And see over here the method is get. I can select this only. I will just swap out this with response. Now I do not need a body because I am just requesting this endpoint and the endpoint knows कि इसको कुछ data retrieve करना है from this thing. And what is that data? That data is nothing but my name itself. And it will be in a JSON format and वो data के अंदर name मेरा आना चाहिए. Hopefully. Yes. I did the configuration right. Did I do it? क्या आया? API response नहीं मिला इसको. Why not?
एपीआई रिस्पॉन्स गलत स्पेल किया गया, हाँ रिस्पॉन्स का स्पेलिंग नहीं है यार मेरे को, डैम, सच डम मिस्टेक राइट। तो यूजुअली डिबग करना ही पड़ता है राइट, दिस वाज वेरी सिंपल मिस्टेक, इससे अच्छे अच्छे लेवल पे भी मिस्टेक्स हो जाता है। So I will get that thing, right? Whatever JSON I have provided over here, response.json. Response is nothing but an object that is sent back to the client when the execution of this route happens, right? So वो क्या बोल रहा है? Message is going to be success and the data that the user is expecting is a name, right? So that data is being sent, which is stored over here locally. ठीक है? समझ गया आपको? होपफुली पोस्ट देख लिया, गेट देख लिया। तो गेट इज अ टाइप ऑफ एचटीटीपी मेथड दैट वी यूज फॉर रीडिंग पर्पस, राइट। तो क्रिएट देख लिया, रीड देख लिया, ऑपरेशंस के अंदर से। पुट इज समथिंग टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा, ठीक है। तो पुट अभी डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाऊंगा मैं, बिकॉज इसके लिए यूजुअली हमको डेटाबेस में स्टोर करना पड़ता है, राइट। तो वी विल से कि हमारे पास एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस रहता, उसके अंदर कुछ डेटा रहता, तो अगर डेटा को अपडेट करना है, कुछ उसमें चेंजेस करना है, तो पुट रिक्वेस्ट यूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा कर दे रहा है, राइट। आप मेथड्स के हिसाब से एक्शन स्पेसिफाई कर रहे हो, पोस्ट मेथड यूज कर रहे हो, इट इज गोइंग टू सेंड सम डेटा, ठीक है, टू द सर्वर दैट द सर्वर कैन यूज। गेट मेथड यूज कर रहे हो तो यू आर रिट्रीविंग सम डेटा फ्रॉम द सोर्स। पुट मेथड यूज कर रहे हो तो सर्वर में कुछ ऐसा सेंड कर रहे हो आप दैट यू वांट टू अपडेट, राइट। डिलीट डिलीट मेथड यूज कर रहे हो तो यू कैन राइटफुली डिलीट सम कंटेंट इनसाइड ऑफ द सर्वर। ऐसा नहीं कि सर्वर को डिलीट कर दिया, ओनली द कंटेंट दैट इज ऑथराइज्ड फॉर योर अकाउंट, राइट। मैंने एक अकाउंट बनाया एक प्लेटफॉर्म के सर्वर पे, तो आई हैव द राइट टू डिलीट सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स। जैसे कि अगर मैंने कुछ डिटेल्स अपना दिया है प्रोफाइल सेक्शन में, तो आई वांट टू रिमूव माय बायो, तो आई कैन डिलीट दैट पार्ट, क्योंकि वो मेरा डिटेल है, राइट। आई कैन नॉट गो इनटू समवन एल्सेस बायो एंड डिलीट देयर बायो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आइडियली वो नहीं होता है अच्छे इंप्लीमेंटेशन। So we understood HTTP methods as well. Now let's move on and let's have a look at routers, what routers actually are. All right. So to understand routers, let's come back to this thing. So by default, this app instance itself is a router, क्योंकि वो राउट चेक करके हमको रिस्पॉन्स तो दे पा रहा है, राइट। बट हमको क्या चाहिए मालूम है, वी यूजुअली वर्क विथ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय स्ट्रक्चर? लेट्स गो टू अनदर डायरेक्टरी, let's try to see the structure over here. There is a there is a folder for models. Okay. There is a folder for views, and there is a missing folder that should have been over here. That is controllers. Okay. What do I mean by this? What are these folders about? तो हम कुछ नहीं करते, हम वो फोल्डर्स एक्चुअली बनाते हैं एंड देन अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट दोस फोल्डर्स आर अबाउट। ठीक है, मैं मॉडल्स का फोल्डर बनाया, इसके अंदर कुछ नहीं, विल वर्क विद ब्लॉग जी, ठीक है, कुछ नहीं, एक फाइल बना रहा हूँ, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। हम काइंड ऑफ एक ब्लॉग काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के साथ वर्क करेंगे टू अंडरस्टैंड प्रॉपर वर्किंग ऑफ बैकएंड। ओके, तो मैंने मॉडल्स फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक फाइल बना दिया, देन ओके, ये गलत चीज सेलेक्ट कर रहा है, एक व्यूज फाइल बनाया जिसके अंदर मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल अभी के लिए बना दिया, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, व्यूज के अंदर जो भी एच टी एम एल फाइल्स रहेंगे ना, वो रहने चाहिए, ठीक है, जो भी मैं एज अ रिस्पॉन्स भेज सकूं यूजर को, ठीक है। तो लेट्स सी, ये व्यूज बना दिया, देर इज अनदर थिंग दैट इज नोन एज कंट्रोलर्स। इनसाइड ऑफ कंट्रोलर्स एवरीथिंग अबाउट ऑपरेशन हैपेंस, मतलब जो कॉल बैक फंक्शन हमने यहाँ पे रखे हैं ना, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, दिस पार्ट, दिस इज गोइंग टू बी इनसाइड ऑफ कंट्रोलर्स फाइल, ठीक है। तो हमने तीन डायरेक्टरी बना दिए, तीन सॉरी फोल्डर्स बना दिए, एंड एडिशनल एक फोल्डर और बना देते हैं, दैट इज गोइंग टू बी राउट्स, ठीक है। राउट्स के अंदर हम डिफरेंट राउटर्स बना सकते हैं, तो ब्लॉग के लिए एक राउटर बनाते हैं, ब्लॉग राउटर, ठीक है। हाउ डू वी क्रिएट अ राउटर एंड व्हाई डू वी क्रिएट अ राउटर? लेट्स कम बैक टू द पीपीटी। एक्सप्रेस राउटर अलाउस यू टू डिफाइन राउट्स इन अ सेपरेट मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल इज नथिंग बट अ फाइल, ठीक है। सो मेरे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, सॉरी इंडेक्स डॉट जी एस में, आई हैव डिफरेंट राउट्स, राइट। बट ये सारा चीज एक ही जगह पे जा रहा हो जरूरी नहीं है, राइट। क्योंकि आपने देखा रहेगा कुछ ऐसे एंड पॉइंट्स रहते हैं, यूजर्स,
communities, राइट? दीज काइंड्स ऑफ एंड पॉइंट्स आर देयर. सो इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं? सारा एक फाइल में नहीं लिख के हम बेटर इसको लाइक लेआउट कैसे कर सकते हैं? तो लेट्स रिमूव दिस डेमोन्स्ट्रेशन. लेट्स कॉपी दिस पार्ट, कट कर दें यहाँ से. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग इसके लिए पहले एक राउटर क्रिएट करेंगे. तो राउटर इज नथिंग बट जो आपके एक सर्वर इंस्टेंस का रेंज बढ़ा देता है, राइट? हमारे पास इतने राउटर्स रहेंगे उतना ही रेंज बढ़ जाएगा, उतना ही मॉड्यूलर कोड हो जाएगा. तो लेट्स ट्राई टू क्रिएट एन एक्सप्रेस राउटर. एक्सप्रेस इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सप्रेस को फर्स्ट. स्पेलिंग बराबर है, यप, ठीक है. नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू क्रिएट अ राउटर. सो आई विल क्रिएट अ कांस्टेंट वेरिएबल फॉर राउटर एंड आई विल से एक्सप्रेस राउटर. देखो सबसे पहला मेथड राउटर दे रहा है एंड आई विल रन दैट राउटर. मैं बोल रहा हूँ कि एक्सप्रेस मेरे को यहाँ पे एक राउटर चाहिए. आई डोंट वांट अ सर्वर इंस्टेंस. मैंने एप्लीकेशन ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिया है. बस मैं सारे चीजें उसी फाइल में नहीं लिखना चाहता हूँ. तो इसको स्पैन करने के लिए, इसको स्केल करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिफरेंट चीजें रखने के लिए मेरे को एक राउटर सेटअप करके दो. एक्सप्रेस को मैंने रिक्वेस्ट कर दिया. नाउ दिस राउटर हैज ऑल दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स, जैसे कि पोस्ट, गेट, पुट, delete, right? You are able to see these suggestions, right? Because that are present over here. So what we are going to do is we are pasting that the things that we had over here over at index.js, and we are going to use this. Now what we are saying is अब यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, हमको पोस्ट राउट मालूम है और हम इसको ऐसा कॉन्फ़िगर करेंगे ना कि देर इज ओनली गोइंग टू बी वन पोस्ट राउट एंड इट इज गोइंग टू come and find out this route, like route handle easily. कैसे करेंगे? Let's have a look at it. पहले ये हटा देते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज किया था, ये कमेंट का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है. नाउ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग अ ब्लॉग, ठीक है. हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ब्लॉग टाइप का डेटा हमारे पास आएगा. तो वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कोशिश करते हैं. तो मैंने राउटर सेटअप कर दिया. नाउ मैंने राउटर के अंदर ही ये फंक्शनैलिटी भी डाल दिया, ठीक है. So I do not want to do this. Instead, I will cut this out of here. I will go inside of controllers file. मैंने block.js बनाया है. I will paste that over here. Const create block, right? Async function, okay? Because I want this to be a synchronous function. And I will say module डॉट एक्सपोर्ट्स. नाउ दिस इज समथिंग डिफरेंट, अभी तक नहीं देखा है इसको, तो अगर नहीं समझ रहा है डोंट वरी, आई विल कवर दैट पार्ट, ठीक है. सो व्हाट आई डिड ओवर हियर इज मैंने वो फंक्शन एज इट इज वहां से उठा लिया. मैंने उसको कंट्रोलर फोल्डर के अंदर एक नया फाइल बनाया जस्ट टू सेपरेट इट आउट, राइट? यहाँ से रीडेबिलिटी बढ़ जाए. एंड आई एम डिक्लेयरिंग दैट फंक्शन ओवर हियर एंड आई एम एक्सपोर्टिंग दैट फंक्शन फ्रॉम हियर, ठीक है. इजी, मैंने वहां से एक्सपोर्ट कर दिया मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का यूज करके. एंड हाउ कैन आई एक्सेस दैट ओवर हियर नाउ? अगर मैं यहाँ पे क्रिएट ब्लॉग लिखूँ ना, स्पेल भी गलत किया, बट सी इट इज गिविंग मी अ सजेशन कि देर इज अ फंक्शन फॉर दिस दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड ऑफ कंट्रोलर्स फाइल inside of blog.js. So if I tap on this, it will auto import it for me. See, it is importing that thing from the blog file, and now I should be able to use this. ठीक है. Now मैंने राउटर सेटअप तो कर दिया, बट इज दिस राउटर ऑल्सो अवेलेबल इन साइड ऑफ index.js? इट इज नॉट. तो हमको ये भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में हमको राउटर प्रोवाइड करना है. कि हम ट्राई कर रहे हैं, हमने एक राउटर सेपरेट आउट कर दिया है. नाउ टेक दिस राउटर, लेट्स गो इनटू द index.js फाइल जहाँ पे हमारा application instance है, the server instance itself. Now what we want to do is we want to import routes over here, right? So what I'm going to do is const wait, const blog routes. मुझे पता है कि ब्लॉग के राउट्स मैंने डिफरेंट फाइल में सेटअप किया है, तो मेरे को वहां से इसको इंपोर्ट तो करना पड़ेगा. तो आई विल जस्ट डू दिस
आई विल डिफाइन द पाथ फॉर दिस। ओके, सेम डायरेक्टरी में है, राउट्स फोल्डर में है, ब्लॉग फाइल के अंदर। सी, इसके अंदर एक ब्लॉग डॉट जेएस है, इसके अंदर एक ब्लॉग डॉट जेएस है। इसके डायरेक्टरी का नाम राउट्स है, तो इसके अंदर जो भी डेटा रहेगा वो राउट्स के बारे में। इसके डायरेक्टरी का नाम कंट्रोलर्स है, तो इसके अंदर जो भी डेटा रहेगा वो फंक्शन से रिलेटेड है। तो ये सेपरेशन हमको रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग बेटर कर देता है, राइट? नाउ वी कैन कम बैक टू दिस, एंड सिंस वी आर properly importing this now, we can use this thing. Now how do we use things? हमको पता है app dot use करके, app dot use, और इसको एक पोर्ट देना पड़ेगा हमको, ब्लॉग्स, ठीक है, मतलब एक राउट हैंडलर देना पड़ेगा, और इसको एपीआई डॉट ब्लॉग्स लिखते हैं, एपीआई स्लैश ब्लॉग्स लिखते हैं, एंड हमको इसको राउटर प्रोवाइड कर दें। अब ये क्या करेगा, नाउ द सर्वर विल लुक, ठीक है, उसके बाद समझ लो एक रिक्वेस्ट है फॉर ब्लॉग्स पोस्ट मेथड, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहले यहाँ पे आएगा ऐप डॉट यूज, उसको मिला लाइन नंबर 14। इट विल सी कि यहाँ पे एक राउटर सेटअप है, तो इट विल गो इनसाइड ऑफ दिस राउटर, जैसे मैं अभी गया, ठीक है, कंट्रोल क्लिक करके। इट विल फाइंड आउट अ पोस्ट मेथड वाला राउट हैंडलर, ठीक है। इट विल मैच दिस पाथ, ठीक है। तो अभी के लिए पाथ क्या है, एपीआई स्लैश ब्लॉग्स स्लैश, ठीक है, स्लैश इज नथिंग, सो बेसिकली एपीआई स्लैश ब्लॉग्स पे अगर कोई पोस्ट मेथड आता है, तो इट इज गोइंग टू फाइंड दिस फंक्शन दैट इज ओवर हियर, एंड इट इज गोइंग टू रन दिस थिंग, ठीक है। तो हमने बहुत चीजें कनेक्ट कनेक्ट कर दी है, राइट? नाउ इज दिस कनेक्शन वर्किंग एक्चुअली? तो टू सी दिस, लेट्स गो टू आवर postman, and we'll rename this as create, ठीक है, because we are creating a blog, एंड अब डेटा नहीं है एंड पॉइंट का नाम, अब एंड पॉइंट का नाम ब्लॉग्स है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ और होता, स्लैश डालूंगा, तो इट मीन्स स्लैश डालना या ना डालना मेक्स नो डिफरेंस, so you can leave that out, doesn't matter. So if everything is correct, right, अभी तक अगर कुछ भी एरर्स हमने नहीं किए, तो इट शुड डू द सिमिलर बिहेवियर जो अभी तक हमको मिल रहा था। डेटा रिसीव करके यहाँ पे आना चाहिए अपने को रिस्पॉन्स में, प्लस यहाँ पे कंसोल में मेरा जो ऑब्जेक्ट बॉडी है वो प्रिंट आउट होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स मेक दैट रिक्वेस्ट एंड लेट्स सी। फाइन, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं जो ऑलरेडी एक ही फाइल में हो रहा था, मैंने उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स और कनेक्शन स्टैब्लिश किए, एंड फिर भी मेरे को सिमिलर बिहेवियर मिल रहा है। तो वाई डिड आई डू दैट मच वर्क? क्यों? बस एक बेटर स्ट्रक्चर के लिए। अगर मूविंग फॉरवर्ड में ये प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, एंड आई ट्राई टू मेक इट वेरी स्केलेबल, इफ देर आर लाइक न्यूमरस राउट्स, लाइक यूजर्स है, कम्युनिटीज है, अकाउंट्स है, लोकेशंस है, कुछ भी हो सकता है, राइट? राउट्स के इनिशियल्स कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे बहुत मल्टीपल राउट्स है, तो उसके लिए मल्टीपल राउटर सेटअप्स रख सकता हूँ मैं, मल्टीपल कंट्रोलर्स रख सकता हूँ मैं, जस्ट टू सेग्रीगेट डेटा फ्रॉम वन अनदर, जस्ट सो आई हैव अ आइसोलेटेड फाइल टू लुक एट। ऐसा नहीं कि मेरे को बस एक इंडेक्स डॉट जेएस है जहाँ पे मैं कंट्रोल एफ करके ऐप डॉट यूज सर्च कर करके मैं ढूंढ रहा हूँ, राइट? जस्ट टू हैव दैट बेटर स्ट्रक्चर, वी फॉलो दिस अप्रोच, दिस इज नोन एज एमवीसी अप्रोच। M stands for models. Models में अभी कुछ यूज नहीं किया, we will have a look at it when we start with MongoDB. Okay. V stands for views. C stands for controllers. All right. Now let's try to work with views. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हमको like ChatGPT की हेल्प लेनी पड़ेगी kind of. Let's say blog website. Yeah. And we are going to say, hi, this is blog website, right? And we are going to go inside of our index.js, and just to see how we are able to send back a index folder, let's see कैसे कर सकते हैं। तो app dot get, ओके, और हम एंड पॉइंट रखते हैं एपीआई। अगर जस्ट एपीआई पे कोई रिक्वेस्ट आता है, ठीक है, तो आई वांट टू हैंडल दैट रिक्वेस्ट। मैं अभी के लिए इधर ही कर रहा हूँ, जस्ट टू सी कि हाउ दिस थिंग्स आर रिटर्न टू अ ब्राउजर एक्चुअली, राइट? So we have response dot send. There is a method, and hopefully it will be able to
access our views directly, and I can say index. All right. Hopefully this, if this line of code is complete, मेरे को confirm नहीं है तो I will copy this. अगर ये run नहीं होता है, अगर if we see any type of error, so we will go to ChatGPT and get some help, right? So what I did was मैंने एक route define किया जो just API है. मतलब अगर इस route पे कोई भी request आता है तो इट शुड मेक अ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो एक फाइल लेना चाहिए व्यूज फोल्डर के अंदर से सिंस आई नेम्ड इट व्यूज राइट तो बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेस शुड हैव एक्सेस टू इट एंड विल चेक द file name index and it will match it to index.html and it will send back this file. Maybe I need to add HTML as well. So let's add that and if there is no requirement हम लोग निकाल देंगे. Okay. तो to actually see हम लोग को ये कहाँ मिलेगा HTML एक्चुअली कहाँ रेंडर होता है यूजुअली ब्राउजर्स में होता है राइट तो लेट्स गो टू अ ब्राउजर लेट्स क्रिएट अ डिफरेंट टैब हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं HTTP लोकल होस्ट लिख ही लेता हूँ होस्ट 3000 and API okay so if I make a request to this since my server is running on the local host, my browser has access to my local host. So it should get the data from my local host for this endpoint, which I am pretty much specified in index.html. So let's see, enter करने पे क्या behavior मिलता है. Okay, I'm getting something rubbish. तो बस एक text return कर दिया. तो इससे हमको क्या समझा कि ये kind of text जैसा इसको treat कर रहा है. तो maybe send file करके कोई method होगा. Right, there is one thing. So let's try again. Huh? Error. Path must be absolute or specific. Okay, absolute या फिर specific होना चाहिए. So maybe I will add HTML and that should fix it. Maybe. Okay, we'll have to look at a workaround. Maybe हमको path देना पड़ेगा उसका. ठीक है. Views के अंदर index.html है. Server is running. Refresh कर रहा हूँ मैं. Path must be absolute or specific root. ठीक है. So we need to take some help of ChatGPT it seems. ठीक है तो take a look at following piece of route handler and debug it for sending an index.html file that I have created inside of views folder in root directory. ठीक है तो मैं बहुत अच्छा डिस्क्रिप्टिव सा प्रॉम्प्ट लिख दिया इधर पे अब मैं यहाँ पे वो पेस्ट कर देता हूँ नाउ चैट जीपीटी शुड बी एबल टू कॉन्फ़िगर अ गुड रिस्पॉन्स फॉर ठीक है तो इसने बोला कि पाथ तुमने नहीं प्रॉपरली स्पेसिफाई किया है दैट इज व्हाई इट इज नॉट वर्किंग ठीक है तो आई नीड टू स्पेसिफाई द पाथ फर्स्ट ठीक है it is saying more stuff. So let's work with path. Now path is something that I will have to install, right? So let's move out of the execution and let's try to install that one. Install path. Perfect. Installation हो रहा है तब तक let's get this thing and let's go back to our index and हम यहाँ के लिए यहाँ पे paste कर देते हैं, okay? So what I'm doing over here is this is a simple get request जो as it is पहले था. The endpoint remains the same. The callback function is being specified over here. Generate the absolute path file to your HTML file. ठीक है तो वो file path कर रहा है dir name ले रहा है okay directory name. This is kind of a variable that is automatically present path के use करने से वो अपना डायरेक्टरी का वो ले लेगा पाथ ले लेगा डायरेक्टली मतलब ये जो पाथ लिख रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली ये हमको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा वो इस कीवर्ड की वजह से वो ढूंढ लेगा देन उसके अंदर व्यूज ढूंढेगा एंड उसके अंदर index.html ढूंढेगा और वो फाइल पाथ को सेंड बैक कर देगा इफ आई सेव दिस फाइल ठीक है तो दिस इज वन वे टू वर्क विद व्यूज राइट मैं बस डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ इफ वी गो बैक टू आवर ब्राउजर एंड टैब करके रिफ्रेश कर रहा हूँ ओके अनेबल टू रीच ओके रन नहीं किया भाई so stupid of me right सर्वर रन होगा तभी तो रिस्पॉन्स कॉन्फ़िगर हो पाएगा राइट
So it was able to read that, take that HTML file and send that as a response, right? Now this is executing, so let's terminate this. ये बस मैंने demonstration purpose के लिए create किया. I will remove this thing. या फिर अगर अब required है तो मैं एक dump बना दे रहा हूँ mock के अंदर. Send file .js, right? यहाँ पे एक dump बना दे रहा हूँ, okay? So you can also make use of this in your index.js just for like looking at what the behavior actually is. Right? मैंने dump create कर दिया. Now let's come back. Let's go back to the PPT and that is at okay, over here. Fine. तो हमने क्या क्या चीजें देखी, हमने राउटर्स का सेटअप देखा, हाउ वी आर एबल टू स्केल आवर एप्लीकेशन, राइट, हम कनेक्शंस कैसे इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं एंड हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन द लॉन्ग रन. मैंने बोला अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ तो इट सीम्स अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अ सिंगल ब्लॉग वाला राउट, राइट, बट इफ यू हैव मल्टीपल थिंग्स टू वर्क विद दिस इज गोइंग टू मेक आवर लाइव्स वेरी मच इजियर. ठीक है, तो राउटर्स हमने देख लिया, एमवीसी देख लिया, मॉडल इज फॉर स्टोरिंग mongoose टाइप ऑफ मॉडल्स, व्यू इज अ फोल्डर, इसके अंदर हम पेजेस स्टोर करते हैं लाइक एचटीएमएल फाइल्स या फिर अदर टेम्पलेट फाइल्स. टेम्पलेट्स क्या होते हैं हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे. एंड कंट्रोलर्स आर वेयर वी स्टोर ऑल आर फंक्शंस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. रोड मैप क्या है अभी. So what programming actually is, right? Programming is like endless time that you spend in debugging and writing of code. So मैंने उसको like श्रेय वो किया है. पहले you build your thing, whatever you want to do. You debug that thing, you test that thing, you enhance that thing, then only you deploy that thing. And this is like a loop, right? एक circle है ये. You might get a problem over here, you have to debug again. You might get a problem over here, you might debug again. ये programming is multiple times same action repeat करना. That is how this like roadmap is being completed kind of. Okay, so PPT का end यहीं पे है. We'll have a small recap and then let's see what we can go ahead and do right with this session itself. ठीक है, तो basics of Node.js हमने देखा कि how some modules are inbuilt into Node.js, some we can import and use, right? Basics में उतना ही कुछ कवर किया, right? हमने ये भी देखा कि node फिर path of the file index.js दिया तो वो फाइल को एग्जीक्यूट करता है, right? These kinds of things we saw. Client server मॉडल को अंडरस्टैंड किया, how response and request work, right? Request and responses work, right? और उसको प्रॉपर लाइक एक ब्राउजर टैब में भी समझा कि चैट जीपीटी कैसे कर रहा है, रिक्वेस्ट के हिसाब से रिस्पॉन्स रेडी कर रहा है. हमने इम्प्लीमेंटेशन में भी लिया, हमने राउट्स डिफाइन किए, वहां पे रिक्वेस्ट हम लोग ने भेजा पोस्टमैन के थ्रू एंड वी गॉट द नेसेसरी रिस्पॉन्सेस, राइट. नाउ moving forward we saw how packages are installed and stuff, right? npm हमने यूज किया. Then we worked with express.js and this is the easiest way to work with API development in Node.js. So Express is a go-to method. ठीक है, so don't worry, don't hesitate. Express के साथ काम करोगे तो every industrial person will respect you for creating your API in Express. Fine. व्यू इंजन अभी अपन ने नहीं देखा राइट नाउ, अभी ये काइंड ऑफ स्किप हुआ है. बट मिडलवेयर हमने पढ़ा, MongoDB अटलास नहीं किया है, CRUD हमने पढ़ा, एक्सप्रेस राउटर पढ़ा, MVC पढ़ा. So before view engines, we will first have a look at Atlas. ठीक है, because I really want to give out some context around models and how actually data storage works. ठीक है, तो let's go to our browser and that is over here. Edge में जाना है. I go to the first app. So there is a website. There is a ठीक है MongoDB. If I search now, it is going to give me this the top result. I can log into my MongoDB account. ठीक है, तो अभी मैं शायद ऑटोमेटिकली लॉग्ड इन हो जाऊंगा, बट ठीक है नहीं हुआ. दैट इज गुड फॉर मी. So what I did was I just clicked on this button. I selected one of my accounts and I logged in. ठीक है, तो अगर तुम्हारा पहले का अकाउंट नहीं है तो वो टॉप automatically it will register you first and then it will log you in. So it is a fresh account. I've done nothing inside of it. So what is the use of MongoDB Atlas? ठीक है,
तो MongoDB के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो आई विल एक्सप्लेन अ लिटिल अबाउट MongoDB. So MongoDB is a NoSQL type database. Okay, it allows you to have your data storage happen on this particular portal that is known as MongoDB Atlas. Okay, so you can create uh, different type of collections. You can create different type of databases. उसके अंदर collections, उसके अंदर documents, and there there is a lot of nesting going on, right? तो वो हम धीरे धीरे understand करेंगे. So as a beginner, what do you need to know? You just need to know कि NoSQL use करना है. And if you have some idea with the MongoDB, तो without hesitation, go to MongoDB, create a new database for that, maybe create a cluster for that, use an existing cluster that you have, and create a collection inside of it, right? So let's see क्या कर सकते हैं. So when you firstly log in freshly inside of this, right? What are the things that you need to do? तो पहले database access के लिए you need to add a user. ठीक है? So I will say I need a user. I want to set the password as Jan only. ठीक है? I want to use an inbuilt role and I want to give an admin role to myself. Okay. And I just tap on this. It will create a user for me and I can use this thing, this kind of like a user and the password to access this MongoDB account, right? Let's go ahead and go into network access. Now यहाँ पे IP मेरे को देना पड़ेगा. So it says कि अगर कोई आईपी आपने यहाँ पे डिस्क्राइब किया ना, तो उसी आईपी से रिक्वेस्ट ये लेगा, उसी आईपी को ये रिस्पॉन्सेज सेंड बैक करेगा. एंड रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट क्या है यहाँ पे? बेसिकली रिक्वेस्ट फॉर डेटा, राइट? क्योंकि डेटा स्टोर कर रहे हो आप, तो यू विल ऑलवेज रिक्वेस्ट फॉर डेटा फ्रॉम MongoDB. तो अगर वो कोई गलत आईपी से है, if it is a IP that is not described over here, then it will not generate a response for it. It will not facilitate that request with an data object, right? तो for now, just for development purpose, मैं इसको like access सबको दे दूंगा, right? I will create this one, and this is basically includes your current IP, and basically it includes all kinds of IPs in the globe. So हमने IP setup किया, हमने एक user setup कर लिया. Now we are good to go and create databases for us. So it says build a database. Now if I click on this, it says कि कुछ सब्सक्रिप्शन बेसिस का है एंड कुछ फ्री बेसिस का है. सो फॉर मी, मैंने इतना टाइम से डेवलपमेंट प्रोसेस में हूँ, बट आई फॉर माई प्रोजेक्ट पर्पस, राइट, लर्निंग पर्पस, I never required to go with a paid subscription. So free just works for us because the data that you store is very minimal in size, right? It is very efficient and I will make no changes. मैंने free subscription लिया, AWS है, AWS रखा, रीजन कुछ है, रीजन भी वही रहने दो, मे बी इंडिया करना है तो कर सकते हैं, बट इफ यू डू नॉट चेंज दैट डजंट मेक अ डिफरेंस. ठीक है, क्लस्टर नेम भी नहीं चेंज करना. आई जस्ट वांट टू गो अहेड विद द मैनुअल स्टफ. बस मेरे को फ्री सब्सक्रिप्शन. अब ये पूछ रहा है मेरे को कि एक यूजर सेटअप करो, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास यूजर है. ठीक है, फिर ये बोल रहा है मेरे को एक आईपी सेटअप करो, तो मैं बोल रहा हूँ एक आईपी है, और मैं बोल रहा हूँ फिनिश एंड क्लोज, एंड मैं बोल रहा हूँ hide the quick start, go to the database. मतलब create this database, it is final. तो अब ये ना MongoDB उसका पूरा एक environment setup कर देगा in their end, right, on their end basically. And फिर मैं इसको ना like from my like application I will be able to access stuff and put some stuff inside of this data store. So let's see कैसे होगा. Let's go back to our code. Let's remove this file, this path. Okay. Now, what I want to do is I want to set up a database, right? So database का configuration, there is a file for database configuration. Over here I have nothing. So I will just देखो यहाँ पे ये कोड तो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है, so I won't worry about this. ये कोई काइंड ऑफ कोड है that I want to use, right? So what I first need to do is I want to work with Mongoose. Okay. So what is Mongoose? So Mongoose is a package. It is known as a object data modeling package. Basically वो आपको interact करने देता है to MongoDB, right? So if I want to make some communication happen, some like sort of translation happen, I need to use some kind of
ODM और ORM टाइप ऑफ पैकेजेस। तो Mongoose इज अ गो टू, क्योंकि MongoDB ही recommend करता है कि Mongoose is the best compatible object data modeling package out there to work with MongoDB. So we won't hesitate in this as well. We will right away say npm install Mongoose. Cool. It will install this package inside of our directory, and we will take this code, this piece of code, and let's see what we can do. Right. अब मैं क्या करूंगा, इस app डॉट लिसन करके कुछ तो है ना मेरे पास. I want to scrape this out. Now just for now, just understand line by line हम लोग understand करने की कोशिश करते हैं. Right now this thing is incomplete because I have not made the import for this, right? Const mongoose require mongoose. Right? Now, when I have imported this package, I should be able to access the methods or functions that are inbuilt, right? So there is a method or a function that is known as connect, all right? This is of type promise, all right? So it takes some time to establish a connection. What I'm doing over here is process.env. मतलब, meanwhile, the process of execution is happening. Access the env file and take the Mongo URI inside of it. इट इज नॉट यूआरएल, इट इज यूआरआई. ये कन्वेंशन है तो यही फॉलो कर रहा हूँ मैं, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है. तो आई एम सेइंग mongoose please connect me to this mongo URI. Where is this mongo URI? As we have discussed, यहाँ पे है. We will, sorry, यहाँ पे पेस्ट करने की जरूरत नहीं थी. What we will do is go back to this. We will say connect. We will select MongoDB for VS Code, right? क्योंकि हम लोग VS Code में कर रहे हैं कोड. तो we will take this, we will paste it over here. पासवर्ड की जगह पे जो पासवर्ड वहां पे था मैंने अभी के लिए जाम ही रखा है. I will save it here, and I will come back to this. Now that Mongo URI that is inside of here, the value of that should be accessible because I have made the configuration for .env, right, over here as a middleware configuration. Okay. Now Mongoose will take that URI. It will establish a connection to my Mongo DB database, right? Over here, this cluster. इस क्लस्टर के साथ वो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेगा. अब इसके अंदर क्या करेगा वो? इट विल डू नथिंग बट व्हेन दैट कनेक्शन इज एस्टैब्लिश, राइट, जब तक एरर नहीं है कुछ भी, जब तक उसमें कोई एरर नहीं है, तो इट विल गो ऑन एंड एग्जीक्यूट दिस थिंग, राइट. तो मैं यहाँ पे एक कॉन्सोल लॉग डाल सकता हूँ. Connected to Mongo. I'm making a lot of mistakes, but that is just fine. Save कर दिया. Now what I'm saying is, since it is a promise, and I have covered promise in the JavaScript tutorial, so promise are उसके कुछ states होते हैं. तो अगर वो successful state तक पहुंचता है, तो I want to execute these number of like these lines of code. पहले console log करूंगा कि भाई connection तो establish हो गया. Next what I will say कि since connection establish हो गया, now only our server should listen for request, right? मैं नहीं चाहता कि सर्वर सबसे पहले रिक्वेस्ट को लिसन करने लगे before even the mongoose has been connected, MongoDB has been connected. Because अगर सर्वर लिसन कर रहा है और MongoDB कनेक्शन फेल हो गया है, तो अगर कोई डेटा रिक्वायर्ड रहेगा तो वो राउट हैंडलर में जाके क्रैश हो जाएगा, राइट. So I only want the server to listen for requests when the MongoDB connection has been established. Okay? If there is any error, I want to log that error to the console and I want to exit out of the process. Cool. This is the index.html file right now. And if I run this file now, it should, on successful connection, it should do this, right? These two console logs. देखते हैं क्या होता है. Hopefully we do not run into any error. Perfect. Perfect है ना guys. It took some time to connect with our MongoDB, and when that happened, the promise was resolved. The block was able to, like, dot method was able to catch that thing. It had a callback function. Callback function वैसे ही कॉल हो गया जैसे ही रिजॉल्व हुआ, एंड ये दो कॉन्सोल सॉरी एक कॉन्सोल लॉग वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और एक ऐप लिसन करने वाला, प्रोसीजर रन हुआ. ठीक है. तो,
that is how you like configure MongoDB basically inside of your server. Now, if I say I want to work with a data storage, so मेरे को कुछ डेटा को मॉडल करना पड़ेगा, राइट? इफ यू हैव वर्क विद एसक्यूएल, उसमें सारे डेटा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं, राइट? और उसको स्कीमास बोलते हैं. तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहना चाहिए, राइट? बट नो एसक्यूएल गिव्स अस फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क विद एनी काइंड ऑफ डेटा. वो तो पॉसिबल है, बट यूजुअली वी डू नॉट uh, let it be that flexible, right? We usually define some schema. So how do we define schema? Okay. So let's understand how schema definition work. And this is made possible using Mongoose package itself. तो हमको बहुत सारी चीजें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है. एक ही चीज मल्टीपल काम करके दे रहा है. Mongoose हमको कनेक्शन एस्टैब्लिश भी करने दे रहा है, वो हमको स्कीमा डिजाइन करने भी दे रहा है. तो लेट्स सी हाउ वी कैन डिजाइन अ स्कीमा. Const, सिंस मेरे को Mongoose के साथ वर्क करना है, तो आई नीड टू इम्पोर्ट दैट ओवर हियर. ठीक है, Mongoose इम्पोर्ट किया. नाउ what I want to do is I want to create a blog schema. So I will say const blog schema. ठीक है. Now I will use a new keyword. ठीक है. I will say mongoose. इसके अंदर एक मेथड है schema का, and I will give it a, since it is a function, I will give it a parameter whatever I want to store. तो I will give it a title. blog का usually title रहता है. इसको टाइप दे सकता हूँ मैं. टाइप होगा इसका स्ट्रिंग होगा. ठीक है. स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा आई वांट टू स्टोर. रिक्वायर्ड, आई मीन इज द डेटा रिक्वायर्ड. अगर ये डेटा मिसिंग है तो इज इट अ प्रॉब्लम? यस, इट इज अ प्रॉब्लम. हमको चाहिए कि टाइटल शुड ऑलवेज बी देयर, राइट? देन वी वांट, अच्छा ये मैंने गलत खोल दिया, पहले खोल दिया. वी वांट अनदर फॉर स्निपेट. इसको भी टाइप स्ट्रिंग दे देंगे. रिक्वायर्ड फॉल्स रहने देते हैं. ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट इज फॉल्स. एंड डिस्क्रिप्शन. ठीक है. तो आई एम मॉडलिंग वट एवर आई वॉन्ट टू स्टोर इन साइड ऑफ MongoDB. ठीक है. मेरे को ऐसे काइंड ऑफ डेटा रिसीव करना है फ्रॉम द फ्रंट एंड, एंड इसको मेरे को परसिस्ट करना है इन साइड ऑफ MongoDB, राइट? तो ये मैंने चीजें बना दी. नाउ देर इज अनदर थिंग दैट कम्स आउट ऑफ द बॉक्स विद Mongoose. दैट इज object that you can attach at the end of the schema that is going to take timestamps, and if you specify true, right, so it is going to automatically generate timestamps. मतलब ये अगर कोई डेटा पुश करता है हमारे सर्वर पे और उसका कोई ऑब्जेक्ट बन के MongoDB पे स्टोर होता है, तो उसके अंदर एक वो बन जाएगा, क्रिएटेड एट का टाइम अटैच हो जाएगा ऑटोमेटिकली. वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट. ठीक है. तो व्हेन दैट इज डन, व्हाट वी कैन डू इज कॉन्स्ट ब्लॉग. ठीक है, आई विल से ब्लॉग. ये इट इज द कन्वेंशन, वट एवर स्कीमा वी राइट, राइट? तो उसका जो भी प्रीफिक्स है दैट बिकम्स द मॉडल नेम. ठीक है. तो मैं बोलूंगा mongoose डॉट मॉडल. दिस इज अनदर मेथड इनसाइड ऑफ mongoose दैट टेक्स द नेम. ऑलराइट. तो यहाँ पे भी ब्लॉग स्पेसिफाई करना है. Now this is very important. Whatever you specify inside of this, right, that will reflect on your MongoDB cluster. ठीक है. यहाँ पे भी हम लोग कलेक्शंस में जाए ना, there is nothing going to be there. ठीक है. तो as soon as we work with like this connection, अभी connection establish हो गया. जैसे ही हम start करेंगे to take data from the front end and make a push to backend, वैसे ही थिंग्स विल गेट रिफ्लेक्टेड ओवर है. तो हम चाहते हैं कि उसका कलेक्शन का नेम ब्लॉग्स रहे. ठीक है. तो व्हाट MongoDB डज एज, वो इसको देखेगा. अच्छा ब्लॉग लिखा है, तो इसको पहले लोअर केस करेगा, वो ब्लॉग करेगा. देन इसका प्लूरल फॉर्म उसका स्टोर करेगा, क्योंकि देर आर गोइंग टू बी अ नंबर ऑफ ब्लॉग्स दैट आर गोइंग टू बी स्टोर्ड ओवर टाइम, राइट? तो वो उसको प्लूरल फॉर्म में करेगा. ठीक है. तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ this value over here. ठीक है. Now what I want to provide over here is the schema that we created above. ठीक है. तो मैंने एक मॉडल फॉर्म किया using this schema that we created, and I want to export this now so that it is available for use. बराबर टाइप कर लो बस. अच्छा, एक्सपोर्ट डायरेक्ट नहीं होगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट होगा, राइट? और ब्लॉग. Now this blog model will be available for use in other files, right? I will be able to import this since I am exporting it from here. तो क्या कर सकता हूँ मैं? I said कि let's go back to my thing. मेरा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया.
मैंने एक ब्लॉग्स का राउटर भी सेटअप करके रखा है। तो व्हाट आई वांट टू डू है, आई वांट टू हैव अ यूआरएल। यहाँ पे एक नया कीवर्ड डाल देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट आता है ना, तो आई वांट टू क्रिएट अ न्यू ब्लॉग इनसाइड ऑफ माय MongoDB इंस्टेंस, राइट। तो हाउ एम आई रिसीविंग दिस, हमारे पास पोस्टमैन है, राइट। एक सेकंड ना, मेरा लेफ्ट की काम नहीं करता कभी कभी। तो मेरे पास पोस्टमैन है, तो मैं डेटा भेजूंगा यहाँ से, और डेटा यहाँ पे कैच हो रहा है। मैं ऐसा डेटा भेजूंगा जो मेरे ब्लॉग्स रहे, ठीक है। और वो ब्लॉग्स में होपफुली, since the connection is properly configured, the things should be stored onto MongoDB. So how do I handle that? तो assume कि डेटा के अंदर टाइटल एंड वो है, स्निपेट है और डिस्क्रिप्शन, राइट। तो टाइटल डीस्ट्रक्चर करूंगा। डीस्ट्रक्चरिंग इज लाइक मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का एक पार्ट है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर ये ऑब्जेक्ट रहता है, राइट। तो इसके अंदर जो भी चीजें हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, वो डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए। तो वी विल सी द यूज ऑफ इट, स्निपेट एंड डिस्क्रिप्शन। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि ये ये सारी चीजें आनी चाहिए फ्रंट एंड से, ठीक है। मेरे को इतना डेटा मिलना चाहिए। नाउ व्हाट आई विल डू इज, आई विल क्रिएट अ चेक, ठीक है। अगर टाइटल, ओके, ठीक है, टाइटल or blog, any of this, sorry, description, any of this is not there, right? So I want to return the response. मैं चाहता हूँ कि उसको पता चल जाए, return response dot status 400 JSON मैसेज अपन यूज कर रहे थे, राइट। आई विल से expected data was not found इन बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रखता हूँ अभी के लिए, बस अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, ठीक है। बॉडी, व्हाट आई एम सेइंग, अगर टाइटल या फिर डिस्क्रिप्शन ईदर ऑफ दीज आर नॉट प्रेजेंट, सो आई डू नॉट वांट टू जनरेट, मेरे को आगे के प्रोसेस से करना ही नहीं, और यहीं से रिटर्न कर दूंगा उसको कि भाई 400 वाला एरर ले, तो बैड रिक्वेस्ट कर रहा है, यू हैव नॉट स्पेसिफाइड द नेसेसरी फील्ड्स दैट आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट एंड ब्लॉक, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोसेस करते हैं डेटा को। अब मैं क्या करूंगा, एक ब्लॉग बनाऊंगा। हाउ डू आई क्रिएट अ ब्लॉग, आई विल क्रिएट अ ब्लॉग यूजिंग ब्लॉग न्यू कीवर्ड, आई विल से BLOG, it should give me a direct import for the model that we created, ठीक है। and I will say specify the object that I want to create। तो I will say title, और देखो ये मेरे को सजेशंस देगा, क्योंकि स्कीमा में मैंने लिख के आया है ना कि टाइटल लेगा ये, तो टाइटल दूंगा इसको मैं, जो मेरे को रिक्वेस्ट बॉडी में से मिलता है, राइट। डिस्क्रिप्शन दूंगा जो मुझे बॉडी में से मिलता है, ठीक है। तो either I can write like this or I can just say title description, सेम चीज हो जाती है। वो समझ लेता है कि द की इज सेम एज द वैल्यू, एंड वैल्यू इज एक्चुअली इनसाइड ऑफ दिस वेरिएबल, राइट। तो इतना मतलब स्मार्ट है जावास्क्रिप्ट टू अंडरस्टैंड दैट। एंड स्निपेट इज आल्सो एज इट इज पास्ड, ठीक है। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। कैसे बनाया ये, और एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसको ऑब्जेक्ट को देखते हैं, पहले सेव करने से पहले ना देखते हैं कि कैसे क्रिएट कर रहा है ये, राइट। एंड डेटा रिसीव्ड करके बोल देते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी हैव नाउ इज नथिंग बट एक न्यू कीवर्ड ऐड करना है यहाँ पे, एंड वी नीड टू सेंड गुड रिक्वेस्ट, ओके। अभी मैं अलता बलता कुछ भी बॉडी में भेजूंगा ना, तो इट वोंट वर्क आउट। इट सेज एक्सपेक्टेड डेटा वाज नॉट फाउंड इन रिक्वेस्ट बॉडी। आई एम सेंडिंग एन नंबर ऑफ थिंग्स, बट वो एक्सपेक्टेड डेटा अगर नहीं है वहां पे, जो एक्चुअली मैं यहाँ पे प्रोसेस में यूज करूंगा, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्ड, लाइक आई एम नॉट गिविंग यू सर्विस, राइट। तो मेरे को वो प्रॉपर डेटा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो आई विल हैव टू राइट टाइटल एंड ब्लॉक टाइटल डिस्क्रिप्शन, ओके, ये कोट्स में होना चाहिए, ओके। जेसन इज ऑलवेज इन कोट्स, की भी कोट्स में और ये भी वैल्यू भी। ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, नथिंग फैंसी, ठीक है। अब द एक्सपेक्टेड आउटपुट इज कि आई एम सेंडिंग बोथ द नेसेसरी फील्ड्स,
तो वो यहाँ से रिटर्न तो नहीं करना चाहिए, आगे के प्रोसेसेस भी करना चाहिए. आई एम क्रिएटिंग अ object, okay, using the model that I configured inside of models के अंदर block.js, ठीक है. And I am giving the things that I am receiving from the front end as a value to this object, and I am simply logging that to the console, ठीक है. तो अभी स्टोर नहीं कर रहा हूँ मैं, बस लॉग कर रहा हूँ. लेट्स सी क्या होता है. रिस्पॉन्स देखते हैं. क्या हो गया. रिस्पॉन्स नहीं किया क्या. एक सेकंड. हाँ. तो आई थिंक सो, मतलब तब तक ये सर्वर रन कनेक्ट नहीं हुआ. तो as you can see, there is something over here. The title is the title that I sent from Postman. The description is the description that I sent from Postman. There is another thing that is underscore ID. So this is a unique ID that this Mongoose object generated for this particular object. Because MongoDB जिस वे में सब चीजों को स्टोर करता है ना, वो की वैल्यू पेयर्स के हिसाब से स्टोर करता है. इवन इनसाइड ऑफ अ डॉक्यूमेंट, इवन इनसाइड ऑफ अ कलेक्शन, इवन ऑन हायर लेवल, मतलब क्लस्टर्स को भी वो की वैल्यूज के हिसाब से स्टोर करता है, ठीक है. तो व्हाट व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज, एक की कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए. तो इट इज गोइंग टू जनरेट अ यूनिक की फॉर दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. इसको हम एक डॉक्यूमेंट बोलेंगे वंस इट इज स्टोर्ड इनटू MongoDB, ठीक है. तो लेट्स सी हाउ दैट स्टोर वाला पार्ट वर्क्स, राइट. तो अवेट कीवर्ड यूज करूंगा मैं. How am I able to use await? Because I have made this a synchronous function, right? And I will say blog dot save, right? So a simple line of code. What I'm saying, take some amount of time, whichever is required, right? And store this object. Every time it is going to be unique, right? अभी जब repeat होगा ना, तो we will keep that thing. Console.log blog and maybe ID डायरेक्टली प्रिंट करते हैं, ठीक है. और उसको इससे मैच कर लेंगे. होपफुली इट विल बी अ यूनिक, every time it is generated as a unique value, ठीक है. Now since it is running, if I make a request from postman, it should store it on MongoDB as well, right. मैं save method यूज कर लिया हूँ. So data has been received. Let's go back to over here. This hash is different, right? See, यहाँ पे 30 से एंड हो रहा है, ये D5 से एंड हो रहा है, तो इट इज डिफरेंट. नाउ लेट्स गो टू दिस थिंग. लेट्स रिलोड दिस. लेट्स सी कुछ हुआ क्या. डेटा हमने स्टोर किया, कुछ आया क्या MongoDB में. सेटअप कर लिया हमने, कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया हमने, मंगूस का मॉडल बना लिया हमने. मंगूस के मॉडल में स्पेसिफाई किया नाम ब्लॉग, उसका प्लूरल इन लोअर केस. एक कलेक्शन क्रिएट हो गया. कलेक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट भी नहीं बोलेंगे इसको, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ओके. एवरी डॉक्यूमेंट दैट आई क्रिएट ना is going to be a different document. Every document is going to have its own a unique ID. So see, this is as easy as working with like a MongoDB और ये setup process. Hopefully this is clear. अब हमने लाइक राउटर्स देख लिया, MVC अप्रोच देख लिया, हमने मॉडल खुद क्रिएट किया, हमने काइंड ऑफ वो भी करके देख लिया, MongoDB पे स्टोर भी करके देख लिया. तो हमको इतना मालूम है कि एपीआई से अब इंटरैक्ट कैसे करते हैं, एपीआई को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, उसको टेस्ट कैसे करते हैं, पोस्टमैन जैसा टूल यूज करते हैं, राइट. नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ट्राई टू रिट्रीव सम काइंड ऑफ डेटा, ठीक है. व्हाट आई विल डू इज यहाँ पे ब्लॉग्स बनाता हूँ, ठीक है. और ये रहेगा टू टू रिट्रीव ऑल डेटा, ऑल ब्लॉक्स, ठीक है. देखते हैं कैसे करता है इसको. एंड लेट्स जस्ट सेव दिस एंड लेट्स कॉन्फ़िगर अ रिक्वेस्ट फॉर दैट, ठीक है. एंड यहाँ पे एक और बनाते हैं, कॉन्स्ट गेट ऑल ब्लॉक्स. ये एल कैपिटल रह जाता है बार बार. असिंक फंक्शन, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ मैं. इफ यू डोंट नो अबाउट दिस गूगल कर लेना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. यहाँ पे एक चीज मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, हाँ गाइस, दैट इज ट्राई कैच ब्लॉक. Usually when we are working on server side, right, we want to handle errors to the maximum extent. हम नहीं चाहते कि एक भी एरर है ना
हमारी नजरों से रह जाए देखने को, मतलब ऐसा कुछ। एंड प्रोसेस कुछ एग्जिट नहीं करना है तो हाँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। और जो ये एरर होता है ना, दीज आर इंटरनल सर्वर एरर्स, मतलब कुछ प्रोसेस करने में कुछ एरर अकर हो गया विच वाज अनएक्सपेक्टेड ऑफ द सर्वर, तो इसको इंटरनल सर्वर, इंटरनल इंटरनल सर्वर एरर ऐसा लिख देते हैं। सो अब क्या होगा ना, ये ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी कोड मैं लिखूंगा वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा जब तक एरर नहीं आ रहा है, वेल एंड गुड। बट एरर आया तो विदाउट द सर्वर क्रैशिंग इट विल जस्ट जनरेट अ डिफॉल्ट रिस्पॉन्स एंड इट विल से कि कोई इंटरनल सर्वर एरर अकर हो गया, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, राइट। बट अगर हम ये स्पेसिफाई नहीं करते ये कैच ब्लॉक, तो क्या होता ना, सर्वर एरर आता तो हमारा सर्वर क्रैश हो जाता। बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी डू नॉट वांट द सर्वर टू क्रैश अब्रप्टली, राइट, क्योंकि सर्विस ही हमारा डाउन हो जाएगा ड्यू टू वन राउट बीइंग फेल्ड, राइट। दैट इज समथिंग वी वांट टू अवॉइड, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग सारे ब्लॉक्स को फेच करने की कोशिश करते हैं। हाउ डू वी डू दैट? मैं एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाता हूँ। आई विल से अवेट बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट अ स्टेटमेंट दैट माइट टेक सम टाइम टू एग्जीक्यूट, ठीक है। तो मैंने ब्लॉग जो मॉडल मैंने क्रिएट किया है, फाइंड यूज करूंगा। फाइंड इज अ फंक्शन that is provided by Mongoose itself, and it is going to take uh, all the blogs that are present in our MongoDB blogs collection. All right. इसके अंदर और भी हम लोग डमी बनाते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू लाइक लुक लाइक। और इसको सॉर्ट करते हैं हम लोग। और सॉर्ट किस ऑर्डर में करते हैं मालूम है? क्रिएटेड एट एज -1, मतलब जो लेटेस्ट हम बनाएंगे वो टॉप पे आना चाहिए ऐसा, ठीक है। अब इफ रिस्पॉन्स इज नॉट, मतलब ब्लॉग्स अगर नहीं है तो मतलब क्या हुआ, ब्लॉग्स वर नॉट फाउंड, राइट। तो वी विल से स्टेटस 404 which is an ideal status code that we use for not found type of responses, and we will say json and message uh, blogs not found, ठीक है। but if blogs are found, right, so we want to send that back, right। तो status देंगे हम, इसको 200 बोलेंगे एंड json बोलेंगे एंड मैसेज दे देंगे जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। डेटा में हम ब्लॉग्स भेज देंगे, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई क्रिएटेड अ न्यू asynchronous फंक्शन जो एक अवेट स्टेटमेंट ले रहा है, जो सारे ब्लॉग्स को फेच करेगा from MongoDB, and it is going to put that inside of this variable. And if this variable is empty, so it is going to say कि कोई blocks है ही नहीं डिस्प्ले करने को, so 404 एरर देगा प्लीज। But if blocks are there, so it is going to send us a 200 status, and it is going to provide us a data that are going to be blogs itself, right? So I have saved this, but this is not accessible to us क्योंकि हमको इसको एक्सपोर्ट करना है। गेट ऑल ब्लॉक्स हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, हमको राउट्स में जाना पड़ेगा। अब हमको इसके लिए एक नया राउट बनाना पड़ेगा विच इज राउटर डॉट गेट, राइट, बिकॉज इज वी आर गेटिंग सम काइंड ऑफ डेटा, राइट, फ्रॉम द पैकेट। सो वी विल से ऑल, ठीक है, क्योंकि हम सारे ब्लॉक्स को एक ही बार में फच कर रहे हैं। एंड वी विल स्पेसिफाई दैट नेम, क्या था नाम, गेट ऑल ब्लॉक्स, राइट, गेट ऑल ब्लॉक्स। तो ऑटो इंपोर्ट हो गया सेम फाइल में से, बराबर है। नाउ whenever this server instance is running, like it is running on right now, अभी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा, हाँ हुआ, वो index.js में देखेगा कि ब्लॉग से रिलेटेड राउट्स इस राउटर फोल्डर में, उसमें पोस्ट राउट एक इस राउट पे आ रहा है, एक गेट राउट इस राउट पे आ रहा है। तो अगर गेट रिक्वेस्ट है तो वो इसके साथ मैच करने की कोशिश करे, मैच हुआ तो वो ये फंक्शन कॉल कर देगा। सो व्हाट वी कैन ट्राई टू डू इज, सिंस द थिंग इज वर्किंग राइट नाउ, अभी पहले थोड़ा ट्राई करते हैं अपन मल्टीपल ब्लॉग्स बनाने का। टू, ठीक है, डेटा रिसीव्ड बोल रहा है, मतलब वो स्टोर भी करते जा रहा है मोंगोडीबी पे, ठीक है। थ्री थ्री बना दिया, इतना आई थिंक सो काम चल जाना चाहिए।
अब मैं एक नया रिक्वेस्ट बनाऊंगा एंड just see how I am like documenting this, right? मैं इसको all नाम दूंगा because I am trying to get all the blocks. इसको और better document करता ना तो मैं इसके अंदर एक folder बनाता, ठीक है? और इसको क्या नाम देता मालूम है? Blocks नाम देता, ठीक है? And this would have been all these requests would have been inside of this. So मुझे मालूम है whatever I am working with is related to blocks. So अगर create route है inside of blocks, so it is going to create a block for me, right? So I think so ये भी रन किया ना हमने, मे बी 2 बार हो गया होगा सेव, कोई दिक्कत नहीं। अब all वाला हमने राउट बनाया है, इट इज गोइंग टू यूज अ गेट मेथड जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, ठीक है? थोड़ा सा जूम कर दूं क्या ये? हाँ, जूम कर दे रहा हूँ। http लोकल होस्ट एंड 3000 API blocks all, right? Hectic लग रहा है but this is a good convention to go with, ठीक है? Now if I send a request, मैंने उसके लिए एक राउट हैंडलर रखा है that should provide me the response as all the blocks that are stored on MongoDB, right? So let's see if I am getting that response. I am exactly getting that response, right? So there is a message जो मैंने कॉन्फ़िगर किया and data key के अंदर I am getting a array of all the objects that I want to see, right? और ये block title 3 2 बार स्टोर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो we might create a delete वाला पार्ट, right? delete वाला थिंग, ये अभी भाई डिलीट करके देखते हैं डिलीट रिक्वेस्ट कैसे काम करेगा, right? तो डिलीट इसको यूज करना पड़ेगा, राइट? मेथड विल बी डिलीट नाउ, I will use the same prefix and I won't give it anything, right? I will just give it a ID. अब ID क्या है और इस वे में मैंने क्यों लिखा है उसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं, ओके? हम ID ऐसे भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे, हम प्रॉपरली यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे ID ऑफ विच थिंग, हम इसको पेस्ट करेंगे। ये वाला कॉपी करूंगा यहाँ पे, इसको मैंने नाम नहीं दिया क्या, डिलीट, और जैसे ही मैं यहाँ पे ये स्टोर करता हूँ ना, तो दिस इज समथिंग दैट आई कैन एक्सेस ऑन द बैकएंड, ठीक है? यूजिंग दिस की आई कैन सर्च फॉर दिस डॉक्यूमेंट इनसाइड ऑफ MongoDB, and since I am able to search for it, I can also run a deletion operation on that one. So how do I actually read this thing in the URL itself? Let's go back to the code and let's create a delete route for now. और यूजुअली कैसा रहता है, गेट वाले राउट सबसे ऊपर होते हैं, फिर उसके बाद पोस्ट आते हैं, फिर अपडेट वाले आते हैं, फिर डिलीट आते हैं। तो अभी हम लोग पहले डिलीट से वर्क करें तो डिलीट यूज करते हैं एंड इसको कुछ नहीं देंगे, हम लोग आईडी देंगे, ऐसा देखो, ठीक है? तो इसके पहले क्या लगा रहेगा, एपीआई स्लैश ब्लॉग्स स्लैश, ये कुछ कन्वेंशन है दैट इज गोइंग टू हेल्प अस, ठीक है? हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प अस, देखते हैं। डिलीट ब्लॉग, अब ये मेरे को कोई सजेशन नहीं दे रहा क्योंकि हमने ऐसा कोई कंट्रोलर बनाया है। लेट्स गो इनटू द कंट्रोलर फोल्डर फाइल, सॉरी, const delete log async request response, let's make this quick, ठीक है? ट्राई कैच ब्लॉक ब्लॉक बनाना है, राइट? एंड ये 2 चीजें डाल देते हैं वहां पे, फाइन। अभी ट्राई करना है हमको। सो ओवर हियर देयर इज समथिंग वियर्ड, राइट? हमने शायद ये अभी तक नहीं पढ़ा, बट दिस इज नोन एज अ param, query param, alright? It is not also, it is not a query param. Query param is something different. This is just a parameter that we are appending to the URL itself. पोस्टमैन पे देखो, कुछ भी इधर लिखा नहीं है, डायरेक्टली बस आईडी दे दिया हमने। तो मैं ट्राई करूंगा इसको रिट्रीव करने का, पहले इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ फंक्शन को, so that we do not run into a issue later. अभी याद है तो अभी एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर लेते हैं, and this is not going to throw an error later onwards, ठीक है? Now what I'm going to do is const id, ठीक है? या फिर blog id, just for better understanding, ठीक है? How am I going to get it? uh, query request dot params dot id, params is parameters list, ओके? उसके अंदर लिस्ट में अगर कोई आईडी है, लाइक प्रीफिक्स एज colon एंड द नेम एज आईडी, तो वो आईडी उस ऑब्जेक्ट में से रिट्रीव करो
उसको ब्लॉग आईडी में सेव कर देते हैं, ठीक है। तो कॉन्सोल लॉग कर लेते हैं अभी के लिए, और देखते हैं ब्लॉग आईडी हमको हमारे पास बराबर आ रहा है क्या, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू डिलीट समथिंग एल्स, राइट। तो वी विल जस्ट से सक्सेस necessary सक्सेसफुली डिलीटेड, बट डिलीशन ऑपरेशन अभी लिखा नहीं हमने, डिलीशन प्रोसेस। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे अभी वी आर जस्ट इंटरेस्टेड टू हिट दिस यूआरएल and get the blog ID and match it with the blog ID inside of this, ताकि हम कोई और डिलीट ना कर रहे हो, राइट। तो लेट्स सी, हिट करते हैं इसको। हाँ, सक्सेसफुली डिलीटेड बस आ रहा है, अभी डिलीट कुछ हुआ नहीं। वी गॉट दिस आईडी एंड दिस इज, इफ यू कंपेयर ना, एग्जैक्टली सेम एज दिस आईडी, फाइन। So this is how we extract a parameter from the parameters object, params object बोलेंगे कि इसको short form में है, but it is kind of understood. Alright. Now since I am able to access that ID, I know for sure I can delete it. Const मे भी डिलीट करने के लिए हमको कोई वेरिएबल बनाने की जरूरत ही नहीं, डिलीट करके वी विल जस्ट एक्नॉलेज द क्लाइंट कि हाँ हमने डिलीट कर दिया। क्या करते हैं हम ना, हम हम क्या करेंगे, ब्लॉग लेंगे पहले, ठीक है। ब्लॉग इज प्रेजेंट ओवर हियर, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ऑलराइट। आई विल स्पेसिफाई द आईडी, कूल। हमने एक अवेट स्टेटमेंट डाला, हमने बोला ब्लॉग मॉडल which we have created using Mongoose, please find one document. What is a document? A particular document is this one document. अभी मैं रिफ्रेश करूँ ना, तो यहाँ पे 4 ऐसे आएंगे, तो लेट्स सी। एंड देन डिलीशन के बाद 3 आना चाहिए, राइट। सो प्रॉपर हम लोग ट्रैक रखते हैं, इससे ही बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगा। सो लेट्स सी आफ्टर रिफ्रेशिंग व्हाट वी गेट। So see, there are 4 documents over here, right? Document 1, 2, 3, 4, and we are trying to delete ये वाला, I think so, right? Last में B है. So uh, once we make this happen, right? We have saved this. Now we have saved this. Once this is connected, we'll go to like postman, and now if I run this thing, it should give me the same response, but this should also delete the document from MongoDB. So let's see, internal server error हो गया, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आया है। So let's see what that is. ID is not defined. Okay, मैंने blog ID नाम दिया है and I am saying ID ले लो। So see, such mistakes do happen, right? So I fix that, save किया, वापस auto run हो गया। Now if I do this, like send a request, it should successfully execute that. It gave me the ID that it deleted now. And now if we go to the browser and if we try to refresh, तो हमको 3 डॉक्यूमेंट दिखने चाहिए inside of this collection itself. Right? Only 3 documents are there now. 1, 2, 3, right? Out of 3. So this is how deletion works, right? So if we want to update something, we can do update related request, right? So let's create a update wala thing. So I want to make a update. तो put is a method. Put से क्या होता है, इसमें भी आईडी दे रहा हूँ मैं, and update existing log, ठीक है। Put is something that we use to take a document and make edits in it. Sorry about that. मतलब एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट लेना है और उसके अंदर एडिट्स करना है। तो मैं क्या करूंगा ना, अभी के लिए एक और क्रिएट वाला बना देते हैं और उसमें सेम ब्लॉग 3 रखते हैं, ठीक है। और वी विल ट्राई टू अपडेट दिस बाय गिविंग इट अ न्यू वैल्यू एज ब्लॉग टाइटल 4 एंड ब्लॉग डिस्क्रिप्शन 4, ठीक है। डेटा रिसीव हो गया, मतलब उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया होगा MongoDB पे। नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ राउट हैंडलर। वेयर वी डू दैट, we do that inside of controllers file. तो कॉन्स्ट बनाऊंगा एंड मैंने नाम क्या दिया इसको, अपडेट दिया है, अपडेट एग्जिस्टिंग ब्लॉक। आसन फंक्शन रहेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा, देयर विल बी अ ब्लॉक फॉर दिस,
ट्राई कैच ब्लॉक ट्राई करूंगा मैं, बिकॉज आई डू नॉट वांट द सर्वर टू फेल एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, राइट। अब ये हो गया। नाउ आई कैन डू द सेम थिंग दैट आई एम डूइंग ओवर हियर। ओके सॉरी, मेरे को स्क्रीन स्विच करने की जरूरत नहीं थी, कॉपी करके पेस्ट किया। ऑल्सो वी कैन लॉग दिस जस्ट टू सी द सिमिलर बिहेवियर, लॉग आईडी। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, एक चीज मैं कर सकता हूँ, वैलिडेशन है ना, whenever you are working with backend ना, you want your backend to be very much robust। तो मैं क्या ट्राई करूंगा, पहले यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक बनाता हूँ पहले तो इसके लिए, कि ये ट्राई कैच ब्लॉक में है नहीं, and that is not a good thing। So let's have a try catch block for that। Remove this, paste it over here, and use the previous clipboard wala part over here. And if I save this, nothing should break, right? Everything is just fine. Now I want to configure a response that is going to say 200 wala status code. It is going to say JSON of message success, and it is going to give a data back। What is this data going to be? Let's see how we are going to work with that। तो हम क्या ट्राई करेंगे ना, हम लोग थोड़े वैलिडेशन अभी देखते हैं। पहले क्या वैलिडेट करेंगे, जो आईडी हमारे पास आया है, इज इट अ गुड थिंग, मतलब इज इट अ वैलिड आईडी, मतलब सॉरी, लेट्स गो बैक टू mongoose। इफ आई से डिलीट दिस, राइट, तो मैं अगर इसको एक भी कैरेक्टर कम कर देता हूँ, दिस इज 16 कैरेक्टर्स लॉन्ग। मैंने कभी काउंट नहीं किया पर्सनली, तुम लोग कर सकते हो, बट अगर मैं कुछ भी वो करता हूँ ना, तो द सर्वर वोंट बी एबल टू कैच दिस। वो कुछ ना कुछ करेगा, इंटरनल सर्वर एरर दे देगा। बट आई वांट अ वैलिडेशन टू हैपन। हाउ कैन आई इनकॉर्पोरेट दैट? तो इफ mongoose, ठीक है, mongoose मॉडल लगेगा मेरे को यहाँ पे, ठीक है, स्कीमा, सॉरी स्कीमा भी नहीं लगेगा यहाँ पे, टाइप्स, टाइप्स ऑब्जेक्ट आईडी, बिकॉज आई नो टाइप्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट आईडी करके कुछ होता है, ठीक है, और इसमें एक प्रॉपर्टी है इज वैलिड, ठीक है, और उसके अंदर मैं ब्लॉग आईडी दे दूं। दिस दिस एंटायर थिंग दैट आई हैव हाईलाइटेड, ओके, दिस इज गोइंग टू रिटर्न एज अ boolean ट्रू और अ फॉल्स। तो अगर ब्लॉग आईडी इज अ 16 कैरेक्टर वैलिड mongoose आईडी, राइट, mongodb पे जो यूज होता है, उस मैनर का आईडी है, देन इट विल अप्रूव, ट्रू देगा, अदरवाइज इट विल गिव अस फॉल्स, ठीक है। तो वी ओनली वांट दिस टू एग्जीक्यूट, मतलब अगर ये ट्रू देता है मतलब वैलिड है, तो हमको रिटर्न, मतलब हमको एरर नहीं थ्रो करना। बट अगर फॉल्स देता है कि अगर आईडी इनवैलिड है, तो हमको निगेट कर देना है, फॉल्स को ट्रू कर देना है और रिस्पॉन्स भेज देना है। और 400 हम बोलेंगे मैसेज इनवैलिड आईडी, राइट, सिंपल। ये एक वैलिडेशन मैंने रखा। एक और वैलिडेशन क्या रख सकते हैं, सिमिलरली अगर हम लोग ये लेके ना डिलीट वाले राउट पे डाल देना, इट विल मेक आवर लाइफ इजियर। अब ये कंसोल का हटा देते, जरूरत नहीं है। ओके, कुछ एरर है क्योंकि मैंने कुछ इनकम्प्लीट छोड़ा है ओवर हियर, राइट। तो अभी के लिए एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। So it should connect properly, and now if I make the postman wala request, okay, wait. If I make the postman wala request, it should say that error, invalid ID। तो सर्वर क्रैश ना होने के बावजूद, मतलब क्रैश होता अगर मैं वो वैलिडेशन नहीं रखता, तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर अस टू पुट सर्टेन वैलिडेशंस दैट हेल्प्स आवर सर्वर टू बी लेस एरर प्रोन, राइट, हर टाइम पे एरर ना हो जाए। तो थोड़े वैलिडेशंस रखना अच्छी बात है। तो हम देखते हैं अभी आगे क्या कर सकते हैं। एक और वैलिडेशन क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग ब्लॉग, ठीक है, अवेट ब्लॉग फाइंड बाय आईडी, राइट, ब्लॉग आईडी। So I want to find an existing blog which has this ID, क्योंकि मैं उसी आईडी वाले डॉक्यूमेंट को एडिट करूंगा, राइट। सो मेरे को यहाँ पे वैलिडेशन क्या करना है, अगर एग्जिस्टिंग ब्लॉग इज नॉट देयर, negate symbol is also like used to check whether it is an empty thing, ठीक है। तो अगर वो empty रहेगा, तो वो response dot status 400, because it won't be able to find that blog ना।
मतलब उसको एग्जिस्टिंग ब्लॉग मिला ही नहीं विद दिस पर्टिकुलर आईडी, ब्लॉग नॉट फाउंड, and just for consistency so smaller caps रखते हैं, smaller case रखते हैं, okay? तो अगर एग्जिस्टिंग ब्लॉग नहीं है तो हम उसमें अपडेट्स तो कर ही नहीं सकते, तो वी विल सेंड बैक दिस रिस्पॉन्स। ये हो गया सेकेंड वैलिडेशन। थर्ड अब कुछ चाहिए ही नहीं, वैलिडेशन नहीं चाहिए, हम एग्जिस्टिंग ब्लॉग में ही कुछ चेंजेस करेंगे। एग्जिस्टिंग ब्लॉग के टाइटल को चेंज करके वी विल स्पेसिफाई अ न्यू टाइटल जो हम बॉडी में से लेंगे, ओके। ये कॉन्सोल लॉग हटा देता हूँ, होपफुली अंडरस्टूड है सबको। एंड आई एम गोइंग टू टेक टाइटल, स्निपेट एंड डिस्क्रिप्शन, राइट, क्योंकि इसी के साथ मैं एडिट करूंगा, वट एवर आई वॉन्ट टू एडिट विथ आई विल एडिट, राइट। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मेरे को मिलेगा, एंड आई विल जस्ट स्पेसिफाई टाइटल राइज existing blog description and existing blog snippet, right? If there is anything, right? अगर नहीं है तो I will keep a validation as empty string at least. कुछ नहीं है तो empty string ला, ठीक है? Maybe one way of validation. Although this shouldn't be there क्योंकि ये empty string नहीं होना चाहिए, तो So that is it. When I did these updates to the existing blog, now I want to save this update to the MongoDB, right? The existing blog dot save. Okay. Simple. And I want to send back the updated blog. So maybe I store this in something, updated blog, and I write that name over in. ठीक है, सो लेट्स सी इफ द अपडेशन वर्क्स। सो हमने क्या क्या किया इसका रिगार्डिंग, हमने उसको प्रॉपर इसका भी वो राउट बना दिया है, उसका कंट्रोलर सेटअप कर दिया है। सो इफ देर इज नो एरर वी शुड बी एबल टू मेक अपडेट्स टू इट, राइट। तो ये क्या हुआ, ऐड रिक्वेस्ट अपडेट and it is going to be of type put. Okay, put is something different, patch is something different. So I want to use patch, okay. Put is something different, okay. Put होता है मतलब एक जगह पे दूसरा ऑब्जेक्ट रिप्लेस कर दो एज इट इज। पैच इज समथिंग जो एग्जिस्टिंग है उसको एडिट कर दो। ये क्या हुआ, पैच मैंने अपडेट नहीं किया क्या, इम्पोर्ट किया तो हुआ है, नहीं किया, हाँ नहीं किया, पिछले टाइम क्यों नहीं दिया था एरर, दिस इज समथिंग वेयर। तो ये होता है, हाँ एरर ऐसे आते ही है। तो इफ आई अब इम्पोर्ट दिस नाउ दिस शुड रन प्रॉपरली। पैच रिक्वेस्ट यूज करूंगा मैं बिकॉज आई नो कि अगर एक एग्जिस्टिंग चीज में हमको एडिट्स करने हैं तो वी यूजुअली गो विथ पैच। पैच मतलब एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा एडिट्स करो, लोकल होस्ट एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज 3000 एंड यहाँ पे हमको सेम आईडी देना है। तो व्हाट आईडी शुड बी यूज, तो अभी यहाँ पे एक और ब्लॉग बना होना चाहिए, तो उसको ले लेते हैं क्योंकि हमको ब्लॉक टाइटल 3 वाले को ब्लॉक टाइटल 4 करना है, राइट। तो वी विल डू इट इन द सिमिलर फैशन। हम इसका ऑब्जेक्ट आईडी ले लेंगे, हम यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर दें, सॉरी कॉपी नहीं हुआ क्या, हाँ कॉपी हो गया एंड कैंसिल, ये एडिट नहीं करना हमको, right? अब ये आईडी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, सो दिस शुड बी अवेलेबल और पैच मेथड, पैच मेथड देखेगा वो, फिर इसके साथ मैच करने की कोशिश करेगा, मैच होगा डेफिनेटली इसी के साथ मैच होगा। एंड ये आईडी वैलिडेट होगा बैकेंड पे बिकॉज आई हैव पुट अ वैलिडेशन चेक, if it is a proper mongoose object id then only it will be proceeded, otherwise cancel out, right? Then match होते ही it will try to update the thing with a new body, right? So we need to specify a body, raw and json। थोड़ा ज्यादा बड़ा स्क्रीन ना, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, अभी टाइटल अपडेट करना है हमको तो टाइटल दे रहे हैं,
uh, blog title here, and description, here. And just for snippet का use नहीं हुआ अभी तक, so let's make use of snippet as a he, right? Vedant and Maki would be liking this snippet. So let's try. Let's try whether this update happens. अगर update properly run होता है, so right now we won't just receive a success message. We will also get a updated blog. So let's see. Perfect. So we got the updated blog, and the updated ad wala time है ना, timestamp will be uh, renewed, right? This time is not matching. So the created at time and now the updated at time has been like मतलब वो proper track करता रहता है MongoDB properly. ठीक है? So lovely. We studied all kinds of methods, and let's come back to let's come back to our PPT, and let's see if we have missed out on something. So we have missed out on view engines, and I think we should take a separate session on that because it will also require some front end related stuff. So I'll keep a short duration for front end as well. We will configure a blog एक website type, and we will integrate all these kinds of operations that we configured inside of that website, and we will make that website communicate with our backend system, right? And we will totally make use of view engines. View engines are nothing but template engines जो हमको different type of templates में डेटा एम्बेड करने देता है ठीक है एंड दैट वाज pretty much it for this session. Thank you very much. That was all about the backend that I know.